Yes, I Let have me no idea. see. And this is my Okay, are we first live? live ever. I Are we don't know. live? Are we It live says live. It or says not? live on top. Oh, okay, let me see. S- मुझको तो कुछ दिख भी नहीं रहा भाई. एक सेकंड. How do you see things here? नहीं वो पता नहीं मैंने क्या किया है बट हाँ 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 आ गया लाइव आ गया. Okay, so आ you जाओ सब मजा read. आएगा. Okay, so you can read the texts here, No, and even you can read, guys. You can also read. Hi, uh, hi. okay. Oh, I'm that's nice. Mohita. This is my first time ever on live, and Hi, this is Ritvika. good. It's a great way to connect with. Yes, seems exciting. And suddenly you texted, and I was about to sleep. I don't know why today it felt like a boring day, and I was like, okay, I'll retire because चलो अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं एंड से थैंक्स टू exactly. आदित्य. दिविजन Adit, भैया को लेके आ जाओ. मैंने कहा ठीक है लेके आते हैं. okay, तो बहुत अच्छे हैं. where मैंने is कहा he? ओके. I उनसे don't ये know. क्वेश्चन पूछ लेना. मैंने कहा रिकॉर्ड करके डालते हैं. Okay, what question? What I heard you were talking about retro planets, right? नो नो. Okay. आदित्य जोएश Hmm. like these blue people white people they were asking. Okay. बताओ भाई क्या क्या सवाल है तुम्हारे. लेट्स बूस्ट हिज डे. just gang gang. Gang. Now बता. you have a gang. मैं बंदूक लेके आ जाऊं ऐसे किसके कंधे में रख के ताननी है मुझे. No, actually, you know why I said it? Okay, my day was low because हाँ. somehow today I was not able to charge my either iPad or phone, and most of my books are in my iPad and phone. So I was not able to read, and I was like, what should I अरे do मैं पढ़ now? देती हूँ तुम्हारे लिए. तुम मुझे किताब बताओ कौन सी पढ़नी है. मैं डेली यहाँ पे की किताबें पढ़ती हूँ. You know what? You know what I'm reading? This is a very, very great thing that happened recently. I'll tell you what. So I have हम्म, noticed this pattern in my life कि अगर मुझे कुछ भी if I want to know, let's say any topic about anything, I will get it in some book at a correct time. Okay, I will हाँ. not get it on the spot just because मेरे को पता है कि यहाँ से मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे मिल जाएगी. That never happens. So I think before Diwali, 2 months before Diwali or something last summer, I was consulting. I was on a consultation call, and this client told me, कि, you know what, you should read Om Swami's book on Sri Suktam. And I was like, okay, fine, I'll read that book. And she was telling me it's so good. Sri Suktam, it talks about every mantra, all 16 mantra in Sri Suktam. And I was like, okay, I'll start doing that. हम्म, And I ordered it on the same time, like when we were on the call, I ordered that book and I received it the next day and started reading, and I loved it so much. And I decided that from Diwali onwards, I'll start doing Sri Suktam every day. And from Diwali till New Year, 1st January, I did it. It was on 1st November. I think Diwali was on 1st November, 2nd November. From then till New Year, 2 months, I did Sri Suktam every day. I also knew in that book, Om Swami talked about this book by Sanjukta Gupta, I think, shayad that, हम्म. Lakshmi Tantra. And I was like, I want to read that as well now. Because when you get into Sri Suktam, it's so beautifully written. You want to understand every mantra of अब it. श्री विद्या में चले जाते हो इनडायरेक्टली. श्री सुक्तम पढ़ने के बाद में इट्स लाइक वंस यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट यू कैन Huh. you will easily that will make your way towards श्री विद्या श्री कुल की Yes. तरफ जाने देता है. And I was trying to read that, and I was like, okay, I was every day reading it, and I was like, okay, I need to know more about it in more detail. Where can I find it? And that thing from my head totally slipped. के लक्ष्मी तंत्र में he has referred it कि लक्ष्मी तंत्र में उसका detailed वो है detailed explanation है. And I forgot. And this time I was back home. As I told you last time, I moved to Hyderabad, so I was here for one हम्म. week, and I actually तुम कहाँ picked up दिल्ली my. में हो. I'm in Sonipat, yeah, just next to Delhi. आ जाओ फिर मिलने के लिए. मैं भी यहीं Sure. हूँ. You can see I'm in mufflers and sweaters and everything. नहीं नहीं मैं Uh, भी शॉल में बैठी हूँ. yeah. मफलर लेके आना तुम पहन करके. एक्स्ट्रा Yeah. लेना कोई दिक्कत नहीं. मैं भी फरीदाबाद में हूँ. तुम वहाँ पानीपत सोनीपत से दिल्ली आ Yeah, जाओ. Faridabad, मैं very. फरीदाबाद से दिल्ली आ जाती हूँ. बीच में मिल Yeah. लेते हैं. Yeah, I'm here just for 3 more days. So I came for only what सेम हियर. मैं भी 3 days. शादी में आई हूँ यहाँ पे. चौथे दिन मैं चले जाऊँ. Yeah, that's it. The house has become like छोटे से time के एकदम लिए. बढ़िया. देखो आदित्य आ गया है. भैया ह्यूज रिस्पेक्ट टू योर Ah, रिसर्च. thank you so यही much. आदित्य है. Thank मतलब you. इसकी आत्मा तड़प रही थी तुमसे मिलने के लिए. मैंने कहा देखो
We इसे should have कहते हैं added that is यूनिवर्स सुनता है। I second that totally universe hota hai because I was telling you this thing happened and I found the whole detail word by word every explanation and it is said that Lakshmi has herself talked तो about मुझे it कोई in the किताब गिफ्ट करने वाले हो? to you. हाँ, If I have to तुम gift you a kitab, I'll tell you which one I'll give you. If अच्छा it is फिर in गिफ्ट this कैसा जब तुम पहले ही बता no, दोगे तो? I am like that. मेरे को गिफ्ट अपने जानने भी होते हैं, बताने भी होते हैं. You know what? I am gonna gift you this. And if someone is gifting me, I'm like, what is it? पहले मुझे बताओ. समझ सकती हूँ मैं, ये मेरे साथ में भी है ये। Yeah. But गुड, that दिस is इज गुड थिंग। कौन yeah. सी किताब गिफ्ट करने वाले हो? बताओ। I have to think about it. Oh, I know one. Which तो I can. बताओ। So it is by I don't remember S. Radhakrishnan, I think. Or it is the where is it? I don't have it in मेरे घर में सब कुछ हो रखा है. तो The तुम लेके आओ the ना, मैं खुद Vedant. ही ऑर्डर कर दूँ। No, no, I'll get it for you. I'll get it for you. No worries. I have like a copy which is like with my notes. If you want one with my notes or one without the notes, I can get you fresh नहीं, नहीं, copy वि as well. विद नोट्स चाहिए, ये तो यही से तो कहते हैं सोने पे सुहागा। So you know what I थोड़ी just मेहनत use refer to मुझे other मेहनत books. थोड़ी Okay? कम करनी पड़ेगी, हाँ। So yeah. So I'll give you this the Vedant, the Upanishads, the secret of Upanishad or something. I हाँ, don't देखा? ऐसे the ही principle of Upanishad. यही यही कुछ एक्सपेक्ट भी कर रही थी मैं, पता है? ऐसे ही The कुछ रहेगा। principle Upanishad is great. जुपिटर आ रहा है तो उपनिषद, वेद, वेदांत यही आ रहे हैं मेरे पास लॉर्ड। You will love it. You will love it. I made a post about it once about the detailing of Om, that you know how it हुँ, contains all three states and all four states actually of our mind. It's amazing. You'll love Upanishad if you read. People हाँ, are texting as well. आई विल रीड इट। हाँ, Yes. हाँ, लॉट ऑफ पीपल टेक्स्टिंग यार। Oh, you can श्री read विद्या that. पे डिस्कस कर लो। श्री Yeah. सुत्तम इज़ रियली गुड, माय Yeah. डैड टॉट मी। Yeah. पढ़ो, पढ़ो, मज़ा आएगा पढ़ने Yeah. में। Yeah. Let's boost अब ये this. स्पीड से लिखेंगे, ऐसे Yeah. भागेंगे फिर Just कमेंट्स planet ऊपर, on ऊपर, risk. ऊपर। Bhaiya, how to judge planet on respect to each other as told by you as planet on respect to each other with respect to each other. Bhaiya, how to judge planets with respect to each other? Oh yeah, this is okay. Vargotam planet significance. They're just powerful. That's it. ऐसे मन-मन में नहीं बोलना है, बताना है हमें। Vargotam planets and people, you know, the thing is, I'll tell you, people take astrology more than it is. Okay? So if you are saying Vargotam planet, what is the significance? Nothing. It's just powerful. That's it. So if you are looking in, सो ईज़ी। yeah, that is it. That's it. You cannot make अच्छा, some, पावर कौन-सी वाली है? just it increase its Shadbal. The Shadbal thoda increase ho raha hai. That's it. अच्छा, और मतलब उससे क्या इफ़ेक्ट आएगा? so depends if it's positive or negative. So if a planet is negative, तो negative power increase हो रही है. Positive है तो positive power increase हो रही है. So तो अगर astrology में प्लैनेट यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल sixth lord है. अगर 6th लॉर्ड है, हाँ, तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट? और वर्गोत्तम है तो इट गेनिंग पावर। नाउ सिक्स्थ लॉर्ड होके वर्गोत्तम हो गया, सो नाउ इज़ गोना क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स। बट लेट्स से इट्स ओके। 10th लॉर्ड एंड देन वर्गोत्तम है, तो इट इज़ नाउ गेनिंग पावर बीइंग पॉजिटिव। सो अब ज अच्छा लगा ना, ये समझ में आएगा अभी। सो इट्स जस्ट पावरफुल है तुम्हें पता है, या बाकी लोगों को नहीं पता कि अलग-अलग जगह का पावर किस तरीके से यस, काम करेगा। दिस इज़ वन थिंग पीपल कन्फ्यूज़ पॉजिटिव नेगेटिव वर्सेस स्ट्रांग एंड वीक। So strong and weak is just कि कितना इम्पैक्ट आने वाला है। पॉजिटिव नेगेटिव इज़ द फर्स्ट थिंग यू हैव टू फिगर आउट। ओके, सो हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन मेलेफिक एंड हुँ। अफ्लिक्टेड? Malefic and afflicted is see, malefic is natural unka impact, right? If it's Surya, not Surya, let's say पहले Saturn, Mangal, Rahu Ketu, right? Or let's say Budh with some negative influence, let's say Budh with Saturn, or Moon, which is very, very close to Sun, right? So we'll consider them as malefics majorly. कि वो problematic हैं in their natural cause. So even no matter how positive they are, they will bring some negative influence. So नैसर्गिक हुँ, गुण अपनी दशा में planet लाएगा ही लाएगा, right? Let's say even अगर वो if you चंद्र have, का या लेट्स से त्रिकोण का स्वामी है, let's say नेचुरल Saturn मैलेफिक is प्लैनेट। 4th, 5th, right? Saturn is हाँ, lord of 4th and 5th, right? Together, या फिर 9th, 10th. 9th, 10th being very, very positive. Let's consider that 4th, 5th से ज़्यादा positive. 9th, 10th का lord है, right? So it is super positive. But since it is a malefic,
वो अपना नेचुरल इम्पैक्ट लाएगा ही लाएगा। व्हेन इट्स दशा स्टार्ट, यू विल फर्स्ट बी हिट बाय सम प्रॉब्लम्स and then it will come into betterment, like it will get into positives. So every planet has to bring their natural impact. So no matter how negative your Venus is, and Venus gets very afflicted very quickly, no matter how negative your Venus is, but वो start होते ही कुछ अच्छा जरूर करेगा, and then it will give the negative. So malefic benefic is their natural tendencies, their नैसर्गिक गुण. And afflicted would be any influence. Affliction can be positive or negative affliction, positive affliction. Ke if situated with a positive planet, it becomes positive. If situated with negative planet or the lords of negative houses, sixth का, eighth का या फिर 11th का lord के साथ बैठा हुआ है, then it becomes a negative. Then it causes problem. So that is one thing people majorly confuse. They forget one thing is they forget नैसर्गिक गुण, or they just rely completely on नैसर्गिक गुण. That they दोनों को combine नहीं करते हैं. You know what? One thing, if you allow me, I'll tell you one thing. कर दिया One, मैंने अलाउ I'll I'll tell you. Okay, if you have any research on it, I am researching on this, and there are so many people here. I think 42 people, so they can chime in. You will see this thing, Venus. You will, if you are going through charts, you will see Venus is a planet which gets afflicted instantly, right? Even before Moon or before Mercury, Venus gets afflicted. Venus की दशा अगर negative है Venus, तो damn sure वो आपको problematic problem देगा ही देगा, या फिर आपका सप्तमेश है तो problem देगा ही देगा. There is no escaping from them. ठीक है? No matter how much sugar coat करके हम बताएं कि अरे Venus है, everything will be fine. No matter, in your heart ये वो problem देने वाला इस है. हिसाब से लाइक अगर 8 लॉर्ड होके बैठा हुआ है तो फिर वो कुछ अनक्योरेबल डिजीज दे सकता है। 8th lord होकर कहाँ बैठा हुआ है? 8 में बैठा है या नहीं, 6 that में becomes बैठा है। positive. So 8th lord in 8th Venus is fine, right? ओके। That is one thing. It makes a person, live longer. हाँ। So 8th lord Venus in 8th itself, that's good. 8th lord Venus in 6th, now that's not good. इसमें people want to be like अरे विपरीत राजयोग है and everything, उसके साथ तुम्हारा लग्नेश भी strong होना चाहिए. It does not work one way. So lagnesh ka strength is very, very necessary with that. But my observation is Venus ka debilitation that happens in Virgo, usse zyada negative you will find it in Leo. And I can tell you this thing, if you find a Leo Venus in any chart and they have the dasha or antardasha starting, it does not have to be all the time. Dasha no, specifically period active hua hai Venus ka. You can just see them cribbing always. And it has become a मेरा है thing. मेरा है You have मेरा Venus, है dasha start hui? मेरा Kab है hui? वीनस लियो का है। Venus Leo. Or लियो का है। when dasha starts, you वीनस tell लियो me. वीनस लियो इन 12th हाउस। See, again, 12th is good. For Venus and Jupiter, 12th is good. हाँ, नहीं For तो Mercury 12th and हाउस में Venus, वीनस जुपिटर दोनों है। सो व्हेन दिस वीनस अंतर्दशा स्टार्टेड आई गॉट hmm, मैरिड एंड आई गॉट okay. मैरिड ऐसे। आज Quick. लड़का मेरा कल शादी। Oh, that's quick. And, सुपर क्विक दैट्स सुपर hmm, क्विक। एंड उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद तो फाइनेंसेस की जो बजी है ना मेरी 12th में within dasha, विद इन दशा मतलब पहले मुझे जैसे अंतरदशा लगा आई गॉट मैरिड हाँ, एंड देन आई गॉट फ्यू ऑर्डर्स पेंटिंग का hmm, अब्रॉड से। सो hmm, आई सोल्ड ऑफ लाइक सम 5-6 पेंटिंग्स hmm, यूएस में। और उसके बाद में फाइनेंसेस जो खराब हुए हैं ऐसे 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 ऐसे। तो hmm. जब तक वीनस चला है तब तक तो इट वाज आई डोंट नो कैसे निकाला मैंने। So मतलब Venus in एवरी Leo, अंतरदशा वाज लाइक इट अपार्ट फ्रॉम सन। Venus in Leo does that. Venus in Leo specifically is worse than Venus in Virgo. If you see person compare Venus in Virgo versus Venus in Leo will tell more stories कि मेरे साथ ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये हुआ. Venus बट in व्हाई? Virgo, I don't know. That is one thing. I don't know. I am researching. I have zero idea. This thing, and I'll tell you one more thing. Mars, Mangal in uh, Capricorn versus Mangal in Leo. Mangal in Leo does way better than Mangal in Capricorn. Don't ask me why. I don't know. It is just ठीक an है। observation. It is just an observation. हाँ, During the dasha, ओके, when you ओके। see, when you are looking at someone's chart and they are talking to you about everything, and then you are sitting and listening, and side by side check कर रहे हो.
And you're like, okay, I have seen the whole chart from every aspect. You have taken every aspect that possible, right? जितने भी उन्होंने लिखे हुए हैं rishis ने. And then you're like, okay, now the only explanation is somehow this happens. So this comes in. I think here what I can make sense out of it, like when Venus is in Leo, it is in the enemy sign, Sun. But it happens like there are so many times it's an enemy sign, right? Venus in Jupiter का sign भी तो enemy sign ही हुआ technically. बट बट टेक्निकली वीनस जुपिटर के साइन में एग्जॉल्ट भी हो रहा है. Exactly. So वही ना वो enemy sign वाली explanation that's why starting में हटा दी थी अब कि नहीं enemy sign वाले explanation नहीं नहीं हो इनफैक्ट सकती. नहीं नहीं होगी. कुछ और खोजना पड़ेगा मुझे. That's why I said there are 45 people. उनमें से someone can chime in. But I think बताओ we should बताओ read बताओ दिमाग लगाओ read अपना. आप में चीफ इन रॉयल्टी सन, क्योंकि मार्स सन के साइन में अच्छा करेगा. दैट्स फॉर श्योर. Mars Leo में does amazing. It's like almost another level strong. It's तुमने way ये आईएएस ये यूपीएससी वाले चार्ट्स देखे हैं जो yeah. ये तो उसमें कॉमन फैक्टर तुम्हें क्या लगता है व्हिच इज द मोस्ट, जो Hmm. ये तो सबके चार्ट्स में मिलेगा ही मिलेगा. नहीं, I have not found anything which is सबके साथ मिलेगा मिलेगा. अच्छा Uh, 80% चार्ट्स में जो मिलेगा. हाँ मतलब नहीं भाई that's what I'm saying. The majority I have not found anywhere जिसके में see we try as an astrologer we have been taught कि sun देखो right, but I have tried seeing that नहीं है. I have seen that कि sun की without presence sun की भी they are in government in very nice situations, and people with sun they are doing corporate jobs with a very high position, very famous, awarded, rewarded, but lonely. You've seen that. So अभी तक I have not found anything which comes directly कि अरे this is the chart and this you can directly relate to civil servants or government job वाले. Right, but I can like for example I can tell you finance wala charts which is like I can relate अरे ये है chart I can just like oh finance में होगा oh IT में होगा, that I can tell you like instantly. It has become a game for me. If a person comes for career I do not read their description first, I just try to calculate okay let me figure out what it is and I am able to. Okay, IT and finance wale guys their chart is telltale. Okay, this is the yoga, very very simple बताओ yoga. कब बताओगे, बताओ अभी. We'll go into that, but I think there are so many comments we have not read any, and I think it's पढ़ो bad पढ़ो for पढ़ो. the people who देखो are writing. They are making effort. Deepa is mentioning Venus is seen as scriptures forbid certain activities during the day. What is the impact of a debilitated planet which is retro? Debilitated planet which is retro is debilitated is just lower of the power. Retro is just increasing of the power. Calculated, go into Shadbal and find the power, total power. ये दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. या दिग्बल इज यूजुअली वे मोर वैल्यूएबल देन एनी अदर पावर. Both have great prices. Oh, there's someone are like commenting on it. So Vargatam is basically the planet which is has highest strength. No. Bhaiya, you take the literal meaning of the shlok in books as per your videos. Certain astrologers say they interpret them as per current times and add practical experience to them. Your opinion, please. Yes. Literal meanings I take because it is mentioned several times. So if a person is saying, if a rishi is saying, let's say Jupiter in 12th brings you money. Jupiter in 12th brings you money. Jupiter in 12th brings you money. So what I would take is Jupiter in 12th brings me money. I do not want to try to add Jupiter in 12th brings me money because this. And because I have added my own because कि इस वजह से लाता होगा, now someone else will interpret that somewhere else. So this thing happened in जैसे कि if you look into Saturn in 7th, right? People will be like शादी नहीं होगी because Saturn is cold planet, right? Because Saturn wants hardships. Now those because is not mentioned in Shastra. So अब क्या होगा if someone hears your video or if someone sees it, people will be like, oh, he said cold planet, he said loneliness. Oh, so Saturn in 7th makes a person isolated. They'll add their own interpretation to it. Now they are focused on coldness and शादी में problem. So they might be like, oh, shadi hogi. They are those jo, Reason, it's basically they, like they're yes, finding they reasons are for finding it. reasons and then they'll try to add it. Whereas none of that is true. You don't know. Just as we are talking about that, Venus in Leo does way harm. Now we don't know the I don't know. because. Yeah, we don't I know the don't know. because. So it's an observational thing. Right? It has come up multiple times. I must have seen 200 charts of that. I can just say more than 200 charts in just a situation, and I'm like, oh, they are all in mess. So if I give a because,
Now, person focuses on that more. Whereas your job, to some extent, as an astrologer, is to interpret data, not find a reason for that data. Makes sense. Yeah, because we are what we are doing. We are like brokers, let's say. हम देखते हैं ग्राफ and we are telling invest. I'm not saying invest in this because this is this. I'm just like इसका ग्राफ ऊपर जा रहा है invest. इसका ग्राफ नीचे जा रहा है sell or जो whatever like whatever you want to do. So this is what we are doing. कि you know this is the situation, do this. This is the situation, do that. So I will not say because this is happening and create something. I'll tell you why. One of the, and I don't want to say bad or stupid, but one of the thing which I learned later. हम देखते हैं लग्न कुंडली, सूर्य हाँ, कुंडली, चंद्र कुंडली, right? चंद्र कुंडली, Yes, and they are अरुणा important. लग्न. Yes, so they are important, right? So I've heard so many astrologers say Chandra Kundali देखते हैं because it represents your man and because your man is so important, so you have to see it. And बिकॉज़ बीपीएचएस के अंदर लिखा है. नहीं लिखा है. That's the thing, नहीं लिखा Yeah, है. I read this. They mentioned, okay, I read this. Sarvat हाँ, Chintamani चिंतामणि में में है. BPHS में it is mentioned कि there'll be 3 charts and you Yes, have to consider whichever is strong. strongest. Yes. So you have to consider whichever is strong. That is where it ends. हाँ, Because नहीं लिखा है कि बिकॉज़ हाँ. ये आपका मन का वो है कारक, नहीं लिखा है. नहीं, नहीं, नाउ हाँ, जो भी स्ट्रांग है. हाँ, जो भी स्ट्रांग है वो कंसीडर करना है, ठीक है? नाउ पीपल कम अप विद देयर ओन बिकॉज़ जब चंद्र मून का चंद्र इज़ लाइक मन कारक, सो दिस इज़ योर मन की कुंडली व्हाट यू वांट फ्रॉम योर हार्ट एंड ऑल ऑफ दैट थिंग, हुँ, राइट? एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वाज़ लाइक मेबी इट मेक्स सेंस. And then I was like, okay, now since I have done some practice and I've gone into deep depth of astrology, and I was like, okay, let's stop believing that. Just focus on what is written and just go there. Okay, and I think we are answering Aditya's question हुँ. tab se. But yeah, and eventually, you know what? I found like such a proud moment for myself कि मैंने लोगों की नहीं सुनी कि मैंने कहा because नहीं माना because I found an answer in I think बृहद जातक में था कहीं पर या फिर फलदेविका में था, either of those. They explained why do you look at the moon kundi. They said lagn is the fastest moving. Lagn हुँ, shifts really quick. हाँ. उसके बाद because lagn is the fastest moving, it is one indication कि सबका चार्ट अलग हो. वो ढाई ढाई घंटे के अंदर चेंज हो जाती है. Yes, so it indicates कि सबका चार्ट अलग हो. ठीक है? If that is somewhat similar, you look at moon because that is the second fastest moving. ठीक है. Mathematically, it will make more ढाई sense. दिन में. And then हाँ. I saw this thing, it makes sense. कि I was calculating one person's chart, and just because the moon was so fast, उसने मेरे को 2 टाइम प्रोवाइड किए थे. एक में मून आत्मा कारक था, एक में अमात्या कारक बना. Because within those 2 times, moon shifted and it became the हुँ. atma karak from amatya karak. And I was like, yes, it makes sense now. And then you look at sun because it is the third strongest, quickest थर्ड moving. स्ट्रॉन्गेस्ट हाँ, थर्ड Yes. क्विकेस्ट करेक्ट. So you have to look at the speed. So mathematically, you'll firstly you check सबसे जल्दी क्या-क्या change हो रहा है, and then what is the second, what is the third. So you have to just make sure that the movement is there somehow. So So that's entire why. personality will be made up of your wherever your sun is placed, So you know moon what? is placed, and Yes. what is your Lagnas. Yeah. So when I was doing this, I had an example. I can give you two charts from the same day with the difference of, let's say, 2 hours. You'll be very हुँ, happy because तुम्हें लग्न डिफरेंट दिखेगा. तुम्हें हाँ. नवमांश कुंडली दिखेगी. Or maybe within 15 minutes I'll give you, you'll be very happy that नवमांश change हो गया है. नवमांश लग्न change हो गया है. Right? But if I give you a chart with 24-hour difference, you'll get very angry because कुछ भी change नहीं हुआ होगा. Within 24 hours, everything will come back. Lagna will be same, Navamsa will be same, sun will be there, everything will be there. You'll be like these हाँ, two करेक्ट. charts within 24 hours, the Kundali somewhat repeats. The हाँ. only thing that shifts is moon's मून, Navamsa. मून Moon करेक्ट. and moon's Navamsa. And that is why moon ट्रू. is important to look at. हुँ. Because in 2 day difference, nothing will differ the charts, but moon and moon's Navamsa. So तब तो moon कुंडली देखोगे and moon से नवमांश देखोगे, तो दोनों की अलग चार्ट बन पाएगा, and then you can come to conclusion कि क्या-क्या हो रहा है. So that is सही. why answering Aditya's question, that is why I do not come to आज interpret. आज ना बृहस्पति आदित्य पे खूब बहुत ज़्यादा मेहरबान है.
Oh, sorry, मेरे से phone गिर गया था. Yeah, that he asked ना कि you should interpret. So I was like, okay, let's not interpret unless we are sure, right? करेक्ट, Because your करेक्ट। interpretation leads to someone else's interpretation, सही बात। अब बहुत right? सारे और सवाल आ चुके हैं। आदित्य, हाँ. जाके सामान्य का प्रसाद चढ़ा देना हनुमान जी पे, ठीक है? भैया will sun in Lagn give Karak Bhavnash? What? Bhavnash. कारक भावनाश है। Bhavnash. हाँ, Oh, because sun in Lagn. No. Why 11th is negative house? कारक It is 6th भावनाश है। from 6th. 11th is negative house because 6th from 6th. It's okay. 11th house is great house. It is positive and negative both. Just like white color gets black easily with 100 truth. Okay. My Venus is in Leo, enemy sign. Okay. My Venus Leo, मैम की शादी हो गई है. People are shocked. What about Venus in Scorpio? What about it? What about Venus in मज़े में है, Scorpio? शुक्र मज़े में है स्कॉर्पियो में। Like, no, the thing is, again, this is one thing. And people who are into astrology अच्छा should. अच्छा, एक एक क्वेश्चन यार, यू फर्स्ट कंप्लीट देन आई आस्क। So I was saying, people who are learning astrology or who enjoy astrology should learn one thing, just one thing that I demand of, to ask questions with enough information so that the astrologer can answer. So if you say Venus in Scorpio, now Venus in Scorpio means nothing, right? What does it mean? Venus in Scorpio. Venus in Scorpio in which house and which Navamsa, there's more to it to make some, or if like something has to be. Just Venus alone cannot do anything. This is one thing that I tell my clients majorly. Okay, let's say if you are looking into some seventh house, you're just looking into partnership. Okay. So you cannot be like, okay, seventh house है, so seventh lord या seventh को impact करने वाले planets को हमने देख लिया, बाकी को छोड़ दिया, right? Let's say moon third में हमने छोड़ दिया, उसका कोई काम नहीं है. That's the mistake an astrologer can do because they are like, मतलब you are believing कि moon की वो position impact ही नहीं करेगी आपके partnership को. The actual truth is all 9 planets, all 7 planets in Rahu Ketu, all of them work on everything simultaneously. It's a group project. ट्रू। So seventh house में अगर देख रहे हो तो तुम ये देखो कि third में moon present होकर seventh को कैसे impact कर सकता है. So now you have to use your brain there and write it down. How a planet in 11th, let's say some other planet 11th, can impact 7th house or 7th lord. Something has to come from each planet. So when a person say Venus in Scorpio, this is nothing. This information is like it does not mean anything. Like to me, it does not mean anything. It's Venus in Scorpio. Let's say Venus in Scorpio in first will be different. Venus in Scorpio in second house will be different. Venus in Scorpio in third house and let's say Sun in second house, that will be totally different. So just saying Venus in Scorpio does not make sense. So when people ask ओके। this, yeah, लेकिन वैसे तो तुमने जवाब दे दिया है, बट फिर भी मैं पूछ लेती हूँ कि जो वीनस स्कॉर्पियो साइन की एनर्जी mm, है और वीनस 8th हाउस, ऑब्वियसली दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है कि आप mm, किस हाउस में किस साइन में जा रहे yes, yes, हैं। Someone is understanding from basics, let's say there hmm, are people who don't know how to blend these three. hmm, So, what do you say? Venus sitting in 8th house, what will be the first result that it is going to get, in spite of it is sitting in whichever sign? hmm, Let's not take whichever sign, किसी भी hmm, sign में. But अगर वो स्कॉर्पियो साइन में है या 8th हाउस में है, तो hmm. दोनों में डिफरेंस किस तरीके से आएगा शुक्र का? Okay, so planet will behave primarily. So whenever we are calculating the results, we calculate the results based on the houses first. हाँ, So Venus in Scorpio, not or rather Venus in 8th house in Scorpio. So we'll first come to Venus in 8th house, right? We'll see a positive planet in a negative house, Venus in 8th house, problem, problem, problem. Now we'll see which can be the positions where it is not problematic. So if it's in friendly exaltation or its own sign, then the problems will reduce. So we perfect. start from the house and then go to sign, right? And if you read classic, this is how every classic mentions the method of answering, right? They start Mm, from the house, okay, Venus in this house. One of the best example is what is that? Bhrigu Samhita, mm. right? And this is a recommendation for anyone, 55 people, 63 people here. Go read Bhrigu Samhita. It is, you'll enjoy बड़ी it. प्यार हाउस में एक्सप्लेन कर रखा है सारा, हाउस इसका अलग, Every राशि इसका अलग। house, every house, every planet, every house. So 9 planets in 12 houses, 9 into 12, right? 108, and with Rashis.
कि कौन सी राशि में क्या होगा. So it's just imagine it 108 paragraphs you are reading, right? And you'll get all of your answer. Okay, Venus in Scorpio, Venus in 8th house, Venus in 5th house. You'll get all those answers. So you don't have to ask anyone. Anytime you are like, okay, what will happen in moon in 7th? Just open Bhrigu Sarita, moon 7th. It will give you हाँ, the किसी answer. से क्यों पूछना है? Exactly. खोलो Go पढ़ there लो। and it will give you the answers, positive and negative both. And then it will tell you in which Rashi it is positive, in which Rashi it is negative. Simple as that. So you start And from there and then you'll you have get to buy. all the answer. And if you are feeling Arey Bhrigu Sahita is just one resource, I want like 5, like if you are into that, then just buy Chamatkar Chintamani. It's like Chamatkar Chintamani already takes Bhrigu Sahita into consideration and 5 more books. So it is like कौन सी थोड़ी सी चमत्कार चिंतामणि ये वाली Chintamani. मंगाने दो मुझे रुको। Yes. I think we discussed this in last video as well, Chamatkar हाँ, Chintamani के ये बारे में. वाले मैंने ऑर्डर नहीं किए पहन। Yes. अब So नहीं तो it मंगा लो। this is when I moved to Hyderabad, these are the 2 books I took with me. Chamatkar Chintamani I took कब with जा me रहे हो तुम हैदराबाद? 3 दिन बाद? फ्लाइट कहाँ से है Sunday. तुम्हारी? Delhi ट्रेन से जा only रहे हो, फ्लाइट से जा रहे हो? flight तो दिल्ली तो Delhi. आओगे ही वैसे ही। Yes. I'll try to come early. अब तो तुम्हें मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं है। Yes. तो एयरपोर्ट पे मिलोगे, पहले ही मिल जाओगे। पहले ही मिल जाते हैं. Well, we can फिर sit here, ठीक मैं जल्दी आ जाऊँगा. है। कितना जल्दी आओगे? 1 घंटा, 2 घंटा या 1 मेरे को दिन? अपने भी I'll have to check. मेरे को तो अभी ये भी याद नहीं है मेरी फ्लाइट कब की है, टाइम की है. It's evening हाँ, flight that I know, but I don't know what time. हाँ। So yes, if you are also चमत्कार going, चिंतामणि। अरे yes. मैं तो फ्लाइट से नहीं जाऊँगी, हम तो कैब बुक करेंगे और देहरादून निकलेंगे। मेरा You have फ्लाइट to वाला go ऊपर मेरे को नीचे जाना है. I have to मुझे go ऊपर south. जाना है। तुम और ठंड में जाओगे I'll get into थोड़ा नहीं, गर्मी नहीं, वाला धूप मौसम. आती है वहाँ पे। यहाँ ठंड ज़्यादा है, यहाँ गलाने हाँ. वाली ठंड है। कंबल लेके आई मैं आज नया काले Mhm. रंग का। Do यार not tell लगता है me, किसी की yeah, नज़र लग गई है। why? वही मैं कह रहा हूँ, do not tell me you are going to associate planets and colors which we talked. Planets and colors को associate करना is one नहीं, thing. नहीं, अच्छा लग रहा था, मैं तो इसलिए ले आई Mhm. थी, मैंने तो बोला ही नहीं Yes. किसी प्लैनेट का नाम है। मैंने तो कहा काले रंग का लेके आई काले हूँ। रंग का लाइक I know people do that. A lot of people do that. मैंने ये थोड़ी ना कहा कि राहु का लेके आई हूँ, शनि का लेके आई हूँ। आज my mom was doing that and we were because हमारे घर में construction work चल रहा है so we went to select tiles हुँ, and she was like कि ना लोग कहते हैं कि you should not get this smoky color की tiles in kitchen and I was like girl relax. मतलब मम्मी या तो मैं एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूँगा या आपको Yeah, पढ़ा दूँगा। मैं मम्मी को कहा था मम्मी प्लीज रिलैक्स calm down. होता सर है चलो. समथिंग अबाउट मृत्यु भाग। हाँ यार, मृत्यु भाग क्या है? कैसे कैलकुलेट मतलब Chief कैलकुलेट तो खैर friend अब all the सॉफ्टवेयर sun कर देते हैं। yours. Yeah, I have wait a second. I have Mars moon in 12th house Cancer and Virgo. Okay, these questions go चमत्कार चिंतामणि. कैसे हो आप? नाइस. दीपांशु सर से पूछो ना ज्योतिषियों की ज्योतिष से. Yeah, I don't think he'll answer. To me at least. You have talked to him. Maybe to you he'll answer. I have never talked मुझे to him. भी I नहीं don't know. देंगे। But you have had a conversation with him. तो पहले हो चुका है, अब नहीं देंगे। Acha. Yeah, maybe he's too big now. नहीं, आई एम टू स्मॉल नाउ। No, no, no. You are definitely growing. सो Like वीनस, share. जुपिटर I और can't क्या-क्या Jupiter सवाल है Ketu यार? का लगता है हाँ, गमोरा को नज़र लग गई है। scriptures. तूने बहुत सुंदर लोगो बना दिया है ना, हाँ, logo. Oh, गमोरा। अरे मतलब आई एक्चुअली कम लाइव डेली, oh, अच्छा. I you नॉट texted me डेली, today. आई विल टेल यू नॉट डेली, दिन में 3 बार। Oh, सुबह, अच्छा. दोपहर, शाम, Okay. ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। Okay. No, today you texted me, and you know what? So why I texted you as well that I have an idea for the video हाँ, that we can do, and this I was like, if you let me tell you, I'll tell you this idea, and you did not answer to प्लीज़ that. टेल मी। So I was हाँ, like, maybe she is not interested. So the नो idea आई एम was, सुपर इंटरेस्टेड, यू टेल मी। so I think a year back or something, I saw a video by Dhruv Rathi, right, on astrology, that why astrology is fake. And he had some premises based on which he made some conclusions, right? There were some statements that he had in his mind, and using those statements, he came to a conclusion. हुँ, Okay. And when I was watching that video, I did not, again, someone sent it to me on the page. And while I was watching, I did not finish the video. While I was going through it, and I was like, okay, you are making conclusion based on premises which themselves are wrong,
राइट? सो ये premise जिसके बेस पे तुम कंक्लूजन निकाल रहे हो वो premise ही गलत है. So how can you come to a conclusion and come to this judgment कि okay astrology is wrong? Because he thought there are 12 rashis and 12 groups in the world. So everyone is divided in 12 segments. Whereas, you know, when we come to astrology, we do not consider in 12. We consider every chart to be unique. So it is impossible to have same chart as someone else. So you cannot have like it will happen in, you know, as we talk 1.6 crore years, then you will have a same chart, which is like impossible Mm, to recreate. So, you know, some premises that yeah, okay, people will tell you something which is you know, very basic, or they'll tap into your fear. Whereas if you are into astrology, you will know that you do not have to even communicate. Your part is calculation part, right? mm, And this one thing you asked me, na, कि how someone asked के personality के बारे में कैसे figure out करना है from astrology in the last, and हाँ, that's what I tell people. Okay, you know, you ध्रुव राठी ये नाम सुना हुआ लग रहा है ध्रुव राठी का। he's a huge YouTuber. I think YouTube he's a huge personality. ह्यूज Yes, ध्रुव huge. I राठी। think 12 million or 20, I don't know how many, but I remember 12 million something. He was the one Oh, last. okay, okay. Are you talking about this guy? This. Yes. So he's a Okay. big deal. कहीं So तो I was like, देखा we है can. इसे। So I think we can discuss this video and their premises, that why those premises are wrong. That's what I was thinking. We can have a Hmm. discussion on. But yeah, if he comes at us, it will become a problematic situation for us. Hmm. Yeah. ध्रुव राठी। ओके। पोस्टमार्टम करना है, चलो लग जाओ सब लोग काम पे। वेस्ट ऑफ टाइम। यू ब्लॉक्ड हिम। आई डोंट लाइक दैट ध्रुव राठी। मुझे शक्ल अच्छी नहीं लग रही यार। वाइब्स नहीं Wow. थी मैं पहले देख करके। I did not block any. People are, oh, I am very नहीं भाई, open. मेरे साथ मैं बड़ी चूज़ी हूँ इस चीज़ में। जब तक मुझे वाइब नहीं आती ना बंदे से, मैं उससे Uh, बात ही नहीं करती। that is, you are talking to me. I'm ध्रुव इज़ giving the vibe. अगेंस्ट एस्ट्रो। तुम्हारी शक्ल तो मैंने बाद में देखी थी, पहले तो तुम्हारी वीडियो देखे थे। अच्छा, हाँ, yeah, ऋ that is true. ऋषभ I को बता दो भाई क्या है जुपिटर केतु, पागल हो जाएगा। कुछ नहीं है, तुम combination. स्पिरिचुअल हो जाओगे। नहीं, यार जुपिटर no, जुपिटर केतु क्या is करेगा? nothing. No, not spiritual. कुछ नहीं करेगा। No, टॉरस में not क्या spiritual. करेगा? See, Taurus. Oh, that's another thing. Okay, I'll tell you. So one thing again, based on observation, हाँ, then प्लीज़। my research started from observation and came to research. Jupiter Ketu is nothing about spirituality, not at all. नहीं, नहीं, मैं तो Ketu, जुपिटर की बात कर रही थी, मैं तो केतु की बात ही yeah, नहीं कर रही। but when केतु से Ketu चीटिंग comes हो in, जाता है। so yes, cheating के बाद है, but when Jupiter and Ketu, they have one thing in common, which is knowledge. They both love research and both love. So Jupiter, Ketu is the planet for Ved. So if you want to learn Ved, you'll have to have strong Ketu, right? And Ved, technically, in the times of astrology, स्ट्रॉन्ग was the केतु और base. स्ट्रॉन्ग जुपिटर। Jupiter तो है ही. Ketu has the knowledge of Ved and mantra, अच्छा, हाँ, ठीक है। right? So Ketu, उस time पे that was the primary subjects, right? The major subject of study is Ved and mantra, right? So हुँ, उस हुँ, टाइम पे करेक्ट। सब्जेक्ट यानी is completing the whole realm of education. Complete education आ गई, कवर हो गई उसमें. So today's हुँ, time, Ketu will cover all the education, right? With मतलब बहुत ज़्यादा Jupiter, पढ़ा-लिखा आदमी हो जाएगा। yes, the person will be very intelligent. And एंड he, it is with in the sign of Taurus. if it is in the sign of Taurus, see, now here comes a very interesting part. As we were talking about earlier, okay, I was talking about bankers and technology wale people. तो यू सी टेक्नोलॉजी का ज्ञान एक्स्ट्रा लाइक एआई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फिनटेक, और फिनटेक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं फिनटेक। और या फिर यू टॉकिंग अबाउट एस्ट्रो साइंस और यू नो रॉकेट साइंस के बारे में डिस्कस करते हैं, यू विल फाइंड केतु देयर, very अच्छा। upfront, very deep in knowledge. But yeah, second house, second Rashi, Taurus, brings in the information about economics, money, and all. So you are right, fintech. So fintech will be like very deep, very ऐसे good ही in सेड that. ना ये मनमोहन सिंह हैड जुपिटर केतु, लेट मनमोहन सिंह। सो देखो Okay. कितनी नॉलेज थी भाई, बहुत Ne- ज़्यादा पढ़े-लिखे थे वो। Ketu brings in a lot of knowledge, and this is what it is. People are trying to push this idea कि Ketu is like सब छोड़ दोगे तुम नहीं छोड़ोगे, अच्छा तुम पकड़ केतु, लोगे, मतलब तुम तुमने ऑब्सेस हो केतु पे जाओगे. बहुत अच्छा तुमने बहुत अच्छा रिसर्च किया केतु पे। Ketu, प्लीज़ the thing.
हाँ। केतु में मतलब एक और चीज आई फाउंड, you'll find Ketu's influence and strong influence. I will not say where, but just a strong influence in the charts of the flight attendants. हम्म। They are working in the air, right? तो obviously hospitality वाला तो होगा ही, like moon and Venus तो होगा ही होगा, but केतु का strong influence होता है because they are working in the area of hospitality in the most हम्म। advanced side. हम्म। Again, I am trying to give a justification, which I should not. As समझ an रही हूँ मैं। astrologer, I should not. But yeah, again, it comes from there. I've seen it multiple times that flight attendants, whenever I've read their charts, pilots, whenever I read their charts, very strong influence of Ketu. Very, very strong influence. Also in cybersecurity, in AI, or anyone associated with strong, deep technological coding and all of that, you तो see केतु Ketu. अकेले कुछ नहीं करेगा, करेगा ना? Ketu will take the influence of the planet or the Rashi Lord. अच्छा। जिसके ओके। साथ बैठेगा राहु भी, केतु भी, बुध भी, प्लैनेट एंड राशि लॉर्ड का इम्पैक्ट लेता है ना अपने साथ। और यहाँ पे जो बोलते हैं नीच का केतु है, नीच करा हुआ है, वहाँ पे क्या कॉल है तुम्हारा? तो नीच का राहु एंड केतु is actually technically is not mentioned in any of the classical text. So the first thing that we see is coming from Kalidas, I guess, in his उत्तर book कालामृत में। Uttar Kalamrit, where he mentioned the rashis for what do you say, Rahu Ketu. And there's one Exalt। more, and there's one more place where the rashis of Rahu Ketu is mentioned. Is I think uh, R.G. Rao wrote about it in his commentary on Bhrigunandinadi. He wrote another हुँ, book in which he talked about the principles of the Bhrigunandinadi, because Bhrigunandinadi he doesn't talk about principle, he just हुँ, writes down the charts. There's another book that हुँ, he wrote, and in that he mentioned Rahu Ketu ki Uch Neech Rashi. And then mostly you will find commentaries. You will never find a shlok. You majorly find commentaries where people will say that this is the Ucha, this is the Neech Rashi of Rahu Ketu. So technically, Rahu Ketu do not have Ucha Neech Rashis. We see people being like, Aquarius hai, ya Scorpio hai, ya Taurus hai, ya Gemini. We see multiple variations of it. हुँ, हुँ, But हुँ। never, and in never, you'll never find that, never find the use of it. कोई भी श्लोक में कहीं पर भी you'll never find a use of राहु की राशि या राहु उच्च का होगा तो ये होगा, नीच का होगा तो ये होगा. You always find राहु का मूवमेंट किस डायरेक्शन, किस प्लैनेट के साथ है, एंड राहु सिर्फ पृथकता कारक है और वो यूजुअली एक्ट्स एज शनि एंड केतु एक्ट्स एज मंगल. करेक्ट। दैट इज वेयर दे हाँ, स्टॉप. दिस इज़ व्हाट इज़ मेंशन्ड, करेक्ट। यस, दिस इज वेयर दे स्टॉप एज वेल. सो उससे ज्यादा इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस ऑन राहु केतु देन इट्स कंप्लीटली ऑन अस दैट वी आर ट्राइंग टू फोकस टू मच ऑन देम. हुँ, दैट्स व्हाई इट्स लाइक 7 planets to राहु केतु. उससे ज्यादा you don't have to get into it. इतना इतना ज़्यादा दिमाग मत लगाओ सब लोग, है ना? Yes, बसते just राहु दिमाग में केतु चलते का रहते just हैं। add के अच्छा problematic situation. हाँ, राहु की दशा एंड केतु की दशा में you will feel their What impact is के like, what is your call here? Ketu detach wherever it sits? no. What it do then? So Ketu creates problems. Ketu will bring something which is temporary in that area, right? Because झूठ फरेब करेगा, so it will, if it's in career, so someone will come into your life and be like, okay, let's invest. You should invest in this thing, and then they'll take their run away money. Or in relationship, someone will come and be like, oh, let's be together, and after 2, 3, 4, 5 years, they'll leave. Right? Those breakup stories. If you'll ask anyone who has gone through breakup and then trace back the date they met that person, you will find Ketu in at least one of the dashas. I got 10th house का केतु। करियर में if you केतु के टाइम हुआ है, पीरियड पे. like this happened when I was running, we have discussed this, like when I was Yes, running yeah, a oh, Rahu wow. Ketu. So I invested good 5-6 lakhs in Yeah. one business, and then afterwards this guy, he cheated on the part of Yes. So monetary things. again, Ketu does So that. So oh it's yeah, not spirituality, or it's and not even this detachment. Mercury is sitting in second house, So this thing is thing. This is the पैसे का thing. चीटिंग हुआ था। हम्म। Ketu does this thing कि Ketu वाले time पे, and people, I don't know still why, and I got a lot of backlash on this video that you have no idea about it, and I'm like, okay, fine, I don't have an idea. In this video, I'm just trying to present what is given. So if someone is giving their opinion, I will respect that, right? I am not giving my opinion here, there, in those videos. Now I can give my opinion because I have seen multiple cases. I cannot give explanation to that still. ये भी Because ठीक मेरे है। पास yeah, I हाँ, just have an opinion based on what I've seen. जैसे Venus वाला situation या मंगल वाले situation. I can give you केतु के time में I have seen many cases, like back to back मेरे many मेरे को भी cases. बहुत लोग बोल जाते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो किताबों में से बता रही Ah, हूँ। that's what I tell ऋषियों ने Casey. बताया है, आई एम टेलिंग यू Yeah, दैट।
That's what it is. Okay, I don't want to bring my interpretation because there is Mm, enough noise online who are interpreting it for you. Okay, जैसे moon वाली चीज, they have interpreted it to कि आपका मन की कुंडली है वो, right? mm, Whereas and people have interpreted Navmansh, it activates after marriage and all of that thing. You know mm. what? You know what? One of the very funny thing, not funny actually, it's a sad thing technically, that happened. Um, for Navmansh. So I have gone crazy on Navmansh, right? So if you will ask me what consumes my mind is Navmansh, okay? And I'm going to find it out. I am going to figure it out, that I know. So I have read all the books for Navmansh specifically, wherever they have mentioned Navmansh. You will not find any place where Navmansh is used as chart or Navmansh an association with house. Not a single place. But there comes a group of shloks in what's the name of the book? Satyajat. No, not Satyajatakam. I just forgot. I'll tell you. It's a very, very famous book, right? In that book, there are four shloks, four or five shloks that talk about Navmansh in terms of houses. In Okay. terms of houses. Okay. Yes. So in fifth house, if you have this planet. Now, if that is the case, the whole my theory And goes that to toss. changed. Okay, ऐसा तो हो नहीं सकता just based on these four. And I am pretty, you know what? I give myself a lot of room for doubt and not people, other people. So I'm like, अगर I don't believe that all of them have gone through all of those books like I've been pushing after Navmansh. कि उन्हें सारी बुक के हाँ, श्लोक घुस घुस के ढूंढे होंगे कि नवमांश में हाउस है कि नहीं. And once they found it, then so I'm like, नहीं, ये इतना छुपा हुआ श्लोक है, किसी को पता भी नहीं है कहाँ पर है ये, right? And I do not believe that someone read that book, read that slok, and come to a conclusion कि नवमांश में house होता है. So for that, I asked, consulted this very famous person online, Nityanand. Um, he is a he makes videos on Sanskrit, Okay. right? So I was like, Okay. So confirm so exactly I इस want श्लोक का exact मतलब क्या है? translation of the Sanskrit में, is हम्म, exact हम्म, हम्म, translation of the shlok in Sanskrit. हम्म. The thing is, I think मेरी उस किस्मत में नहीं होगा. So I sent him that shlok and I sent him कि okay, what is the reason behind this, and but I never got a response back. So मुझे भेज देना. मैं yes, जानती हूँ दो तीन संस्कृत वालों को, उनसे so मैं चेंज करवा करके पूछ yes. करके ये बताओ So I एक्सप्लेन करके. used my all my brain, and what I think, there are two theories that I have. Either they are misplaced shloks. So the shlok does not belong after this shlok, right? The हम्म. shlok belongs in the chapter, like before those two shloks, right? So if the shlok's placement goes up, the whole thing makes sense. Just because those are ओके. below these two shloks, the whole thing has completely shifted. So either, मिस्प्रिंट तो हो सकता है. yes, so that is one thing. It's either misplaced shlok, one thing. And secondly, it does not directly talk about bhav. ओके. Like Sanskrit shlok does not directly talk about bhav. The translation may the person thought Ketu Bhav and then talked about it. So that is one thing because it does not say Bhav, right? It talks about the Rashi say this place, Rashi say fifth place. So it does not about हाँ, fifth मतलब house, it's like going in fifth from its own place, Rashi. Yes. So sixth from its place, seventh from sixth its Rashi, place. entering into sixth Rashi or being in fifth. So that's why it is. I'll tell you the name of the book as well. It's in my iPad. It's charging. So I would have told हाँ. you that that is the only place you'll find it. Apart from that, nowhere. Not anywhere in the whole available text of astrology. You'll find Navmansh being used as house. भाई, But yeah, एक बार नीचे भी देख लो एक बार. yes, I'm going to see people answering D10 के लिए क्या book recommendation. D10 के लिए oh, D10 is one of the most, again, misused division. D10, people use D10 for career. It is not for career. Uh, I think there are so many. But I have question. Sorry, why is Jupiter in 11th negative even if it is exalted? अरे बताया तो, पहले हाउस कंसीडर करना, उसके बाद राशि कंसीडर करनी है. Yes, I'm also crazy in Navma. That's great. D10 कोई बता दो. D10 is not a division. D10 is just a division for any महत्वपूर्ण काम. It is not for your career.
वो uh, बेसिकली मतलब मैंने जितना D10 चेक किया है, आई hmm, चेक इट प्रोग्रेशन वर्क का, कब किस टाइप का काम आ रहा है, किस टाइप hmm, के वर्क में पर्सन इज गेटिंग इन्वॉल्व, इज hmm. इजीली विजिबल फ्रॉम D10। That again is like a observation. It's explanation दे सकते हैं हम. हाँ, Again, I would सो also नहीं, not मैंने jump to जैसे मैंने conclusion. जितने भी चार्ट्स देखे ना, आई डू दिस प्रोफेशनल रीडिंग, इट कम्स Hmm, सेंट परसेंट एक्यूरेसी के साथ में, I 90 will. टू 100, 90 टू 95% एक्यूरेसी आती है। इफ Hmm, आई लुक फ्रॉम द प्रोग्रेशन पर्पस कि इफ दिस हाउस इज एक्टिवेटेड, देन probably person is, because we know the energy of 1 to 12 houses. hmm, Generally what happen in first house, one gets into some new work, hmm, second house some resources comes to the hmm, person, hmm. right, some financial matters happen, so that's how D10 के अंदर प्रोफेशन से रिलेटेड वो इवेंट्स होना शुरू हो जाता है। But that is my confusion in terms of That D10. is observation. Huh, I get it. So I have like from last year, I have started valuing observations very much. Earlier, I was very strict on no observation, just classics. But now I have gotten into because I have seen some observations which are different from classics. D10 के लिए, if you see classics में D10 की कोई ज़्यादा बात नहीं करी हुई है. You will find only 2 or 3 places where D10 is talked about, and that too in terms of any महत्वपूर्ण काम, the work Hmm. of. So महत्वपूर्ण काम can be, let's say your mother is sick and you want to, find a hospital or something. That is a महत्वपूर्ण काम for you, right? So you can see it from D10. Or let's say you are, starting education, Yes, महत्वपूर्ण काम, that you can see from. Or you are moving into another country for some important that is deal, an important, that taking a महत्वपूर्ण काम. long break from your profession is Yeah, also that's a महत्वपूर्ण काम. So any महत्वपूर्ण काम you see from D10, and that to D10 Lord, right? So D10 ka Lagnesh, so D10 Lord. For career, every place like Faldipika as well, the BPHS as well, in even Brihad Jatak as well, they talk about D9 of 10th Lord. And then they use D9 in detail. BPHS में only one सुरेश चंद्र मिश्र वाली translation में he has gone in extension के हर एक राशि को explain किया उन्होंने. But yeah, Hmm. D10 की बजाय D9 की राशि is used to find out the profession. And that is also one thing that I figured out works every time. So you look at 10th house, you look at 10th house का जो dispositor है, 10th lord का, sorry. So let's say Aries वाला ही, Can you let's take the. explain with an example? हाँ, let's take the Aries का example, right? Aries is the first house, 10th में Saturn हुआ. Saturn That now give let's say you present in Saturn, let's say is present in the 7th house, Venus की राशि में, ठीक है? So in dispositor is D9 or Venus. D1? No, no, D9 में houses नहीं है ना अभी, अभी तक confirm नहीं Hmm. हुआ है. हाँ, I'll find a confirmation and then tell it. Till now it confirm नहीं हुआ है. हाँ, हाँ, D1 में, right? So Saturn D 10th house का lord 7th में बैठा हुआ, ठीक है? So dispositor is हुँ, Venus, ठीक है? Because Venus is the lord of Saturn now. तो Venus कहाँ बैठा हुआ है? Venus क्या कर रहा है? That is going to give you your profession. And let's say Saturn का नवमांश लॉर्ड कौन है? राइट? Saturn का नवमांश ठीक है, लॉर्ड लेट्स से मंगल. ना वो मंगल कहाँ बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है? D1 में। D1 में. हाउसेस तो D1 में ही है. बैठना बैठना उठना दिस D1 पे वर्क, चलता है, राइट? ये मैं भी चेक करती हूँ, दिस इज़ क्विक This is quick. This सूत्र। is so direct, quick. It is so direct. You can just look into it and you'll be like, this is what's happening. Because यस, अगर Saturn 7th में है, now Venus, let's say, is present in second house. So you will not come to के 10th lord और 7th में बैठा है. So it has to do something with, no, 10th lord का dispositor Venus second में बैठा हुआ है, तो finance या food होगा. 7th में बैठा फाइनेंस, है. फूड, कम्युनिकेशन, यस, सेकंड में बैठा राइट? इसलिए। यस, 7th का होगा तो बंदे विल बी लाइक ओह ट्रैवल हो सकता है, मंत्र हो सकता है या फिर पार्टनरशिप से रिलेटेड, मैट्रिमोनी से रिलेटेड हो सकता है या फिर बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है। बट दे विल मिस कि नो 7th में बैठना इज़ नॉट एंड दे इम्पोर्टेंट। आर लाइक डिपेंडिंग ऑन द प्लैनेट का खुद का ओन सिग्निफिकेंस क्या है, लाइक इफ यस, इट इज़ यस, मर्क्यूरी, इफ इट इज़ यस, वीनस, इफ इट इज़ मार्स, एग्ज़ैक्टली। देन द हाँ। डेफिनिशन विल चेंज। Yes. So the same thing which people, if you are starting and if anyone is starting early in astrology, they see planet कहाँ बैठा है, 10th lord 7th बैठा है, तो ये काम होगा. Whereas once you progress into astrology, you see 7th 10th का dispositor कहाँ बैठा है, तो 10th का हाँ, dispositor is Venus, वो Venus एनर्जी, कहाँ बैठा है? द एनर्जी प्रोवाइडर इज़ द डिस्पोज़िटर। Yes. तो dispositor कहाँ बैठा है, that will give you the answer. अब मी एज़ एन आर्टिस्ट, आई वांट टू मेक अ पेंटिंग,
बट आई Hmm. डोंट हैव कलर्स। Yeah. मेरे को मंगल एनर्जी दे रहा है कि जाके जिमिंग करनी है तेरे को। सो उसके पास में तो एनर्जी है, व्हाट आई डू, अब वीनस है क्रिएटिव, सो आई विल स्टार्ट डांसिंग। Hmm. Yes, makes So sense. that's how like you have to Hmm. see the energy of planet, the dispositor. उसके Hmm. पास देने के लिए क्या है? If we can give you creative stuff, you will get into some creative Yeah. things. If it is going to give you some Saturn की तरह True, एक true, true, hardened, true. tough work, tough Hmm. environment, then you'll be working in such environment. Someone commented, yes, yes, it's Nityanand. They know it. Someone नहीं है, lot of people commented, वो तो हम नहीं देख रहे हैं, हम अपनी बातों में मस्त हैं। We should, we should. That's bad. We should actually pay attention to them. There's something I यमदूत कह know. रहा है लॉट्स ऑफ लव, यमदूत तुम्हारा प्यार But ना हमें ऊपर ले जाएगा, हमें अभी यहीं रहने दो। people are like रात होते जा रही है, viewers बढ़ते जा रहे हैं. Okay. हाँ, किससे इम्पोर्टेंस अपनी, पूछना आज कि तुम आ गई हो इसलिए व्यूअर्स बढ़ गए, मेरी बकैती सुनने के लिए कोई नहीं आता है यहाँ पे। नो 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 वही है जो ऐसा नहीं है. एडिक्टेड है। हाँ, नहीं वही लोग आते हैं जिन लोगों जो लोग टीवी सीरियल देखना पसंद नहीं करते। You know what? Somehow I am also here because मेरा iPad charge था and I was not reading. वरना this time I put my phone on silent. Start reading. This is my time. See, this is what I have right now. On my bed, like on my bedside, I have these two, like India Today and बहुत Open. This is what बहुत I was बढ़िया। reading. Okay, okay. I have नहीं नहीं, nothing. I have magazines that I can read. तुम्हारी अंतरात्मा ने सही जगह कनेक्ट कर दिया है। अब तुम Yeah. किताबें मत पढ़ो, तुम जवाब दे दो। मैम हम आते हैं आपके लिए रोज। हाँ, अपराजिता रोना नहीं है, एकदम नहीं रोना। Someone said, I अच्छा, know इससे you पहले just. कुछ कुछ क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चन था जोएश का, एंड आई आल्सो वांटेड टू आस्क दैट क्वेश्चन। जो हमारा परंपरा की जो नॉलेज है Hmm, दैट वी गेट फ्रॉम hmm. कुल, अब जिस भी परंपरा से, तो मतलब व्हाट इज योर कॉल ऑन दैट पार्ट? What about व्हाट इज it? योर ओपिनियन I परंपरा would की जो just say, नॉलेज मिलती है? just keep it and try to spread it. Matlab, what about it? Like, what about parampara knowledge? Like, what? कृपया करके सवाल को और अच्छे तरीके से पेश किया जाए। Like, yeah, I get it. Like, if बिल्कुल। you say parampara knowledge, let's say I have some knowledge which is being given, which is given to me, right? In my बाय माय opinion, गुरु, या yeah, बाय by माय my गुरु। guru, I would give it. I don't know why. It is with me. I would give it. So you asked me, okay, what I do. I don't hide. I told people that okay, for my astrology or for my education, I do Yagyavalkya Sutra. Yagyavalkya Saraswati Sutra. Not about hiding. Point is like when you're doing research on the books, Mhm. right? So There in are some knowledge which is hidden, which is carry forwarded by Guru Shishya Paddhati yes, or I Guru Shishya Parampara. believe that it should be given out, or at least if you cannot, put it in a place where if you find someone who is into it, can access it. Because if you go, the knowledge goes with you, Mm, right? And our true. place in this on this earth is not very permanent, right? So Mm, you do not want that knowledge to be equally impermanent as you are. So you want to correct. make it a little permanent. So if you have found something, either share it with people, right? Because one thing I've learned, I'll tell you one thing I've learned. No matter how much you provide people with knowledge, only those people will grasp it, will absorb it, who actually wants to, True. right? You can keep on shouting this. I keep on telling people, how to meditate. I tell them, yeah, I have read Yoga Sutra and I'm telling you the method. I've tried it, tested it. Yoga Sutra ka ye method है, meditate, right? In एक Rahu's दिन क्लास period. लेना मेडिटेशन की, हम लोग भी करते हैं लाइव फ्री मेडिटेशन सीरियसली। So I was like, okay. You know what? I tell चाहो तो people कर सकते हो। in Rahu Dasha, do it. Rahu Dasha, do it. Rahu Anta Dasha, just do it. Do meditate. Simple. Meditate. That's the simplest thing you can do. Pranayam, meditate. Do that. They will not. And I'm like, I am here. I will tell you the method. I am here. I'll tell you the books. I'll tell you the resources. I'll tell you. People just do वो not. मोहित भी कह रहा है एक क्लास इनके साथ मेडिटेशन की, उसको नया टेक्निक सीखना है मेडिटेशन का, एक तो हमने सिखा दिया। No, I just know ठीक है, one. I just like goes and it works for me. So I think maybe मैं एक what काम works for करूँगी मोहित, मैं देवश्रीत को मिलूँगी अभी, तो उससे बोलूँगी चल मुझे मेडिटेशन सिखा दे, फिर मैं तुम लोगों को सिखा दूँगी। I give it to my clients if someone is going through Rahu and that's creating problems. आई Like एम I'm just गोइंग थ्रू राहु, and ट्रीट मी योर is it क्लाइंट, आई causing एम इन राहु मंगल राइट नाउ। is it causing problems? That is also important. ओह, इट इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। Okay, then सीरियसली, आई एम नॉट जोकिंग, इतनी we'll look प्रॉब्लम है into बस। it. It is my Rahu is in 4th house and I'm going through a lot of property disputes. Hmm.
will not A lot of jump to property conclusion. disputes. Yeah, but will not jump to conclusion कि वो राहु की वजह से है किसी और की वजह से. Will calculate it and ठीक then है, come to मंगल it. भी मना लेते हैं, 8th हाउस का लॉर्ड है, मार्स ने भी दिया होगा। मंगल 8th हाउस का लॉर्ड है, और किसका होगा फिर साथ में? 3rd हाउस का। थर्ड का होगा आई या एम फिर वर्गो ascendant। ओके. हम्म. ओके. No, it's Rahu only through which I got the problem. नो, बिकॉज अगर थर्ड का है तो Same, but नाइन्थ, no तो राहु disputes। तो जुपिटर के राशि में बैठा है, राइट? सो हाँ, यू जुपिटर देख हैव भी रहे हैं। सो यू हैव टू सी हाउ जुपिटर इज. प्रॉपर्टी के लिए राहु जुपिटर थोड़ी. इसीलिए जुपिटर हैज टू बी यू नो द कॉज. अगर जुपिटर ठीक है या फिर जुपिटर में स्ट्रेंथ है, जुपिटर पॉजिटिव नंबर्स में है, तो वो राहु की जुपिटर वजह से नहीं हो षटबल रहा. में। ओके, जुपिटर इज वर्गोत्तम, षटबल सी में हाईएस्ट पॉइंट्स में। सी तो फिर वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट राहु की वजह से नहीं होगा, कोई और तो फिर रीजन है. जिसने दिया है वो वापस क्यों नहीं लेके गया? हाँ, तो वो उसकी वजह से नहीं है अंतर्दशा ना. तो निकल गई। वीनस था भाई, वीनस में शुरू हुआ था। हाँ, so see that's the thing, because this happens now. You are coming कि Venus में शुरू हुआ था. So initial point is also important. So that's what most of the people, most of the astrologers will do as well to people, right? Because you and I can understand astrology. That's a little, you can catch it. People will not. They'll be like राहु के वजह से हुआ है, then वो पूजा करवा देंगे आपकी राहु नो की. नो, इट स्टार्टेड इन राहु वीनस, दैट इज व्हाई आई सेड व्हेन यू सेड ना हम्म. वीनस लियो का ज्यादा खराब है, मैंने कहा मुझे मालूम है कितने कलेश शुरू हुए हैं वीनस वीनस में। मतलब आई हाँ. डोंट कंसीडर मैरिज इज अ गुड पार्ट फॉर दैट द हम्म. फेज व्हाटएवर आई हैव गॉन थ्रू। सो वो हम्म. वीनस में कलेश ही था। फिर Okay. प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट वो भी कलेश ही था। सो I think we'll have to discuस that अलग से. People will be हाँ, like हम वो कहने लगा है. बट ठीक है, आई हैव लर्नड, थोड़ा थोड़ा लॉ सीख गई। हाँ. क्या ना, आपको देख के लगता नहीं है प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, क्योंकि मैं हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ, Yeah. बताओ ये भी। आपसे लैंड डिस्प्यूट्स के चक्कर में हम्म. होना ही है क्या? अच्छा मैम यूपी से हैं, हम्म. ये भी So है। which कोई नहीं, chart is देहरादून important for शिफ्ट हो career? जाती हूँ मैं फिर। This So Saturn liberated 8th house means wait, problematic in I'm in-laws। I'm still पीछे. So which chart is important for career? D9 or D10? Chart नहीं है D9 और D10. Until now, chart नहीं है D9 D10. It is just a वर्ग. डिवीजन है, Divisions, I guess. डिवाइड It's किया, just division. डिवीजन। Yes. राशि के divisions हैं, and D9 is more important for career. And D10 is important for something महत्वपूर्ण. महत्व कार्य. That is what is written in the श्लोक. How to अच्छा, see ये money in. D10 में उसमें जैसे नक्षत्र भी कंसिडर करते हो तुम? Nice. Nakshatra is a totally different game. For Muhurats and for calculation of time period or for the impact, the last impact when it is going to happen. That is where Nakshatra comes in. So you can, so what I do, I'll tell you my process, and it's like a open information for everyone. हम्म, How I read charts. In my note, wait, where is my notebook? How do I show you the, can I convert the ऐसे करके यूँ दिखा दो, phone? जैसे मैं दिखा देती हूँ ऐसे, जैसे मेरे Okay. हाथों में मेहंदी देखो, ऐसे करके So I'll show, हम ऐसे देख oh, लेंगे। it will be a information which is like some clients I don't want to share information like that. I have to नाम find हटा a, देना। yeah, I think, yeah, that is what I'm going to do. Wait, I'll have to hide. And if it is someone's, okay, first let me find. मेरा भी तो चार्ट होना चाहिए इसमें, मेरा खुद का चार्ट नहीं है इसमें. Okay, this is one chart. This is सबसे कम information लिखी हुई है. So I'm going to use this one. So I'm going to show, this is how I make my chart in my notebook. This is the least ओके, information chart. So this is the chart. Then I write D9 like this. अकड़-वकड़ बम्बे वो। It's table, right? D9 is a हाँ, table. And then I write the bal of all the planet, हुँ, right? Shadbals. हुँ। And then here I write the dashas. And then I go crazy with the chart कि कौन कहाँ देख रहा है, कौन कहाँ गया है, आत्मा कारक, तुम्हारा अमात्या मर्करी कारक बहुत है, अच्छा है, देखो then कारकांश कहाँ पर है. So I go with this कि इतनी कारकांश यहाँ सुंदर है. राइटिंग है तुम्हारी और इतने No. क्लीन तरीके से लिखा है तुमने, सब So this समझ में is आ रहा है। how I go. Thank you. But this is how I go crazy with the chart. Okay, once it is there, D9, I don't make it as a अच्छा सब chart. छोड़ो, अभी बताओ तुमसे कंसल्टेशन कैसे ली जाए? ऋत्विक पूछ रहे हैं ये। Go on my Insta or go on Insta and मैं भैया से नोट्स बनाने की क्लास लूँगी, कुछ लूँ ना लूँ। नोट्स, मेरे नोट्स पता है कैसे होते हैं? आई विल शो यू। यू विल लाफ। my notes to go crazy. As much as I know, they go crazy, crazy. And I fill मैं my. एक लाइन लिखूँगी, उसके बाद मैं दूसरी लाइन पता नहीं कहाँ से, कौन-सी भाषा में, कौन से वर्ड में
I don't know. it should just make sense to you. That is most important. हाँ, ये It मुझे should, तो समझ में आ जाता है खैर, yes, that is बट all. मैं दूसरी बार में नहीं समझ पाती, एक ही बार में समझ में आता है, फर्स्ट टाइम। So देखो, I'll show you one more example of it. This is the chart I was, and please, if it's your, so don't kill me, someone's. So when I was calculating the timing of kid. So in this we ओके, calculate D9 and D7. So both of them will be used as a table only. People will end the, you must have heard D7 के fifth house में. That हाँ, thing हाँ, does not हाँ। make sense. You have a chart, you have a D9, you have a D7, and then you have like timings on when things can happen and not. हुँ, Right? You हुँ, have हुँ। dashas niche, but D9 and D7 has to be, or थोड़ा और any division. नीचे सरकाओ, नीचे सरकाओ। Oh, and that is अच्छा, what the time period I was calculating, the dashas. हाँ। So I was going there, which was a two chart. यार We तुम are looking for गंदगी क्यों kid. नहीं करते हो? कॉपी पे इतने साफ-सुथरे से रखा हुआ तुमने। ये साफ सुथरे थोड़ी है ये, this is तो नहीं, very, एकदम बहुत साफ-सुथरे अच्छी और बुरी दोनों में नोट्स बनाती हो। तुम काशीनाथ बहुत बढ़िया यार। I hope. आई नोट एवरी डिटेल थिंग्स। गमोरा तुम्हारा भी 8th हाउस का मरकरी है ना? इसका भी 8th हाउस का मरकरी है। My 8th house Mercury just activated recently. ये गमोरा इज़ लाइक ऑलवेज़ विथ पेपर नोट ये पेन एंड पेपर। मुँह से कुछ निकला नहीं इसने पहले लिख दिया। See? ब्यूटीफुल नोट्स। Like, see, this is what it is. My room, like right now, I got a notebook today and got two more books to write more. I love to write. So yeah. Vaya ओह! parampara सेम knowledge. वाइब सर। देखो Sir, तभी तुम देख रहे हो तुम इतना चमक रहे हो। wow. तुमने देखी It's तुम्हारी तारीफ़ें हो रही थी। नहीं, I let me go. वो गर्मी क्या निकल गई होता है? बहुत ऊपर है। बोल रहे थे सर इज़ ग्लोइंग। Thank you. That's all I can say. मुझे लिखने में मौत आती है। मुझे लिख के VP Goyal पढ़ने में मौत has आती है। done great work in D10. Yes, I have read his book. VP Goyal has done great work in D10. Even the Panchagiri uploaded a video on D10 and how lead to creation of bio biohacker company. In my understanding, it is chart that discuss your overall karma of life. If that is the so, okay. Now I might sound petty here. Okay, so don't judge me लिख for दो। that. So VP Goyal book, I got into this mental fight with him. So I was not talking to him. In my head, I was just fighting with him. So no one knows that I was fighting with him. In my mind, I was fighting with him, and I did this thing which no one should do because it's a huge waste of time. But I did this thing. So I took his book, and every every example that he has given, I solved all of these examples without using D9 and D10. So I was like, ओह! okay, I have a ओके। challenge now. I'm going to take your book. And I did the same thing with PS Shastri as well. I took their book and I was like, okay, I'm not going to use any house in rename. So anytime they're using a house, I will just cross that out in their book. I have their book, cross that out. And I was like, okay, let me find a reason if I can find a reason to come to same conclusion. And I was able to. आई थिंक दैट So इज़ लाइक मैथमेटिक्स का यू आर गेटिंग द आंसर फ्रॉम डिफरेंट थ्योरी एंड ही इज़ गेटिंग द आंसर yes, फ्रॉम डिफरेंट yes. थ्योरी। So the thing is, sometimes they use houses, and I was like, okay, if it is if it is so dependent on house, you should not get an answer based on the house, without the house. And if I'm getting the answer without the house, then at least I'm on the right track. I don't know about their track. Their experience, obviously, they are very experienced, so their experience. But if I am on the right track based on the Shastra, I should be. If it is not mentioned in the Shastra, then there should be a method of reaching the answer without using the houses. And I did that. And I हुँ। did the same thing with P.S. Shastri as well. And he wrote a thick book on Gemini Sutra. And if you start reading Gemini Sutra, in the first or second chapter only, they are talking about the Karakansh Lagna, Swansh, and Karakansh. And there is a deviation in the shloks there only. In the first, second chapter only, there are shlok deviation in P.S. Shastri translation versus Sanjay Rath translation. So you are anyway confused from there on, and then you have to use your own brain after that. So you try doing this exercise. Take any book, any astrologer's book. They have given a chart and they have given you the dates and everything. Just try to solve it yourself. It's like, 10th class of mathematics examples. Just try to solve it yourself without looking there. अपने दिमाग से सुलझाए Yes, हुए जो
Yes, and क्वेश्चंस then होते हैं वो जल्दी see, समझ yes, आते हैं। and then see कि उनकी explanation क्या है. And I think you will learn a lot through that. So this is what I did. VP Goel ki book. So someone mentioned D10 pe work. हुँ, So I was like, okay, I've done a fight with him, and I actually crossed his book completely, one by one, and I did not use D10 as he suggested. I used it myself. But yeah, D9 may he is given immense व्हाई detail. The डोंट यू example, राइट अ बुक ऑन योर I एक्सपीरियंसेस? don't think I'm there yet. अच्छा, I I don't लिख think I'm देना। there. Someday. I don't know who will read that though. नो, नो, आई एम गोइंग टू रीड इट। No, no, you two can always ask and call भैया directly. के दाँत बहुत सुंदर हैं, दांत, wow. निःशब्द, मतलब तुम्हें कितना माइन्यूटली डिटेल में देख रहे हो। मेरे को ये ज़ूम ऐसे कर मूव करके। ऐसे कर लेना चाहिए. सॉरी, डस्टर के लाइव सेशन में डस्टर सर का नाम ले दिया। डस्टर के लाइव सेशन में? व्हाट इज दैट? डस्टर सर का नाम ले लिया, समझ में नहीं आया मुझे। ये इस तो कोड कोड वर्ड मारा है इसने कुछ तो। ओके, मार्स संदीप लिब्रा के पटेल also. डिस्पोज़िटर, स्मार्ट पीपल यू नो, In my D10 इट्स Mars गुड and Moon are थिंग। in the fifth house. हुँ, I will. What is it? I cannot answer that. नहीं But आर्ग्यू friends, करना चाहिए, पढ़ने के लिए नहीं, टू गेट सम गुड कंक्लूजन no, आउट ऑफ I इट। cannot answer that because I don't know that, right? क्योंकि D10 Mars and Moon in fifth house of Scorpio sign. So D10 में fifth house, I don't know what fifth house in D10 could mean. The I Saturn in sixth house and Mercury in tenth house. again ये तो combination हो गया. Importance of ग्रह मिलन, मिलान and लग्न मिलान and chart. ग्रह मिलान. हाँ, अच्छा, ये है importance टॉपिक। बतानी है कि नहीं, ये it's बता दो, तुम जब कुंडलियाँ मिलाते हैं, 2 लोग हम्म, आ रहे हैं, शादी हम्म, करनी है। हम्म. अब तुम जब तुम्हारे पास कोई चार्ट आ रहा है, शादी Yeah, करनी है, today morning, today 9:30 I हाँ, did a same call. तो तुम उनकी कुंडली देख कर के क्या देखोगे और क्या बताओगे कि क्यों So शादी करनी है, क्यों नहीं no, करनी है? no, that is not my thing to tell them. हाँ, So I सो tell them व्हाट this इज़ thing. योर थिंग? So I tell them that I can discuss both of your charts in respect to each other, with respect to each other. I can give you information. Decision तुम्हें लेना है, करनी है नहीं करनी तुम्हारे ऊपर है. I will not be the one कहे मत करो या ऐसा वैसा है. करो तुम्हें करना है तो, या नहीं करनी तो मत करो. That's आप completely तो on. इन लिब्रा हो रहे हो तो। I give no, no. I give them all the information. I'm like, take all the information from me. Ask me as many questions. So first thing, as an astrologer, I always ask, what matters to you the most? मैं यहाँ बैठ के तुम्हें पैसों के बारे में बता रहा हूँ, तुम्हें क्या मेरे को नहीं चाहिए पैसे. मुझे चाहिए मुझे लाइक प्यार सोशल चाहिए। स्टेटस या प्यार चाहिए लाइक सो आई ऑलवेज आस्क गिव मी द आइडिया दैट व्हाट यू वांट व्हाट आर यू सीकिंग so are you talking about love between two, are you talking about money between two, are you talking about social status, are you talking about parental involvement, are you उनका talking क्या about करोगे kids. जो बोले मुझे सब चाहिए, मुझे No, no, दुनिया that चाहिए? is सब कुछ नहीं होता है. List it out. सबको भी list out करो. Let's do a longer call. Let's do 10 points, 20 points, but list it out. Right? सब तो मतलब I don't know what. सब तो then I'll be like, okay, सब according to me or according to you. If it's according to me, I'll go with this. But according to you, you'll have to tell. So करेक्ट, first is करेक्ट। I have to ask them the question that what are they looking for. Once they give me an idea, what are they looking for, and then I give them information. So let's say they talk about love. So then I tell them about their Venus or their moon or how their seventh house impacted or how their लग्नेशन सप्तमेश साथ में है कि नहीं, उपपद कैसा है, right? कितने positives, कितने benefits हैं, both the charts. And I'm like, okay, this is your chart, this is the thing, and this is their chart, this is the thing. Now you calculate from yourself for yourself. Does it work for you? Let's say today I had a chart and I told, okay, in your chart you have immense amount of money compared to your partner. If you're okay with that, then go with that. If you are not, कि नहीं मेरे partner के पास बहुत पैसा होना चाहिए, then that's your call. So Ashtakut method is one which people use a lot, right? Gun Milan. But the major problem that I find with Gun Milan is it's very patriarchal. Anytime a girl हुँ, gets a higher stance, the points cut हो जाते हैं, right? So male has to be on the top all the time. Male has to be more energetic. Male has to be more professional. Male has to be more this, right? And every time it starts from the male chart only, right? Female chart is subordinate to that. So when I find it very patriarchal, I'm like, okay, that cannot be the case, right? It cannot be. So Gund Milan just gives you a point. So I'm like, okay, Gund Milan, it's a 2 minute conversation, Gund Milan. कि Gund Milan में आपके इतने गुण मिल रहे हैं, खत्म बात. हुँ, Not even 2 Milan. कि now if इसी को need नहीं है, I'm giving you this is that. But now let's go planet by planet. So things I would definitely consider is the moon
की राशि, मून का जो लॉर्ड है, डिस्पोजिटर ऑफ मून, वो आपस में दोनों के फ्रेंडली हैं कि नहीं? दैट्स द Okay. फर्स्ट थिंग, राइट? नवमांश लॉर्ड्स ऑफ ईच, आपकी राशि का नवमांश लॉर्ड और उनकी राशि का नवमांश लॉर्ड आपस में फ्रेंडली है कि नहीं? आपके सप्तमेश का नवमांश लॉर्ड और उनके सप्तमेश का नवमांश लॉर्ड आपस में फ्रेंडली है कि नहीं? नाउ आई Okay. आल्सो सी कि आपकी राशि में मैरिज के योग कितने हैं, उनकी राशि में मैरिज, उनके चार्ट में मैरिज के योग कितने हैं? Let's say your chart has Saturn Ketu now in seventh, and their chart has Venus Moon, Mm. right? In Uch. Now, this kind of a partnership, I have to tell, she, that girl, let's say, has Venus Moon in seventh and that in Uch, or let's say in Taurus, right? Venus अपनी राशि में होगा, Moon उच्च में होगा. I'm like, that girl is going to be romantic. It's crazy. If you have Saturn Ketu in seventh, you are you do not have a yoke to be with that partner in the same house for long, Okay. right? If Venus Ketu is there, Saturn Ketu is in the seventh, so Saturn you have Ketu. to be in a long distance relationship. They, extended So that long. You is can like from D1 you are from saying, D1, right? it's D1, From D1. yes. So Mm. now your chart shows long distance. Their chart shows a very lovey-dovey. Now it's on you. How are you going to manage it? Or will you be able or not? So that is how I go about, like planet by planet. Now if they say मेरे को social status बहुत matter करता है, then we'll go into Mhm. Sun, we'll go into Rahu, we'll go into Saturn, we'll go into Atma, Matya Karak and all of that things, right? So it starts from there. The person's questions. You cannot just jump अरे Mm. तुम्हें 2 चार्ट दे दिए तुमने मिला दिया. You cannot do it. वो तो तुम अपनी नॉलेज, तुम अपने लिए मिला रहे हो वो चार्ट फिर, कि मुझे ये मैटर करता है वो है कि नहीं. And what is your call on this Manglik? कि मंगल आ जाए सप्तम में हुँ, लड़ाइयाँ हो जाएंगी, टूट जाएगी शादी और नहीं. 1/7 के एक्सेस पे। One thing I tell people, तुम्हारी कुंडली में एक राज्य होगा, तुम राजा बन गए. तुम्हारी में एक मंगल दोष है तो कुछ नहीं होने वाला. तो if one positive is not giving you positive, one negative is also not giving you one negative, ये right? भी ठीक है। तो ये Yeah, so मंगल तो एक you ही होता है, कितने मंगल योग होंगे? yes, you have to have like several. मंगल भी हो, राहु भी हो, सैटर्न भी हो और सन भी हो. प्रॉब्लम हो, सेवेंथ लॉर्ड डेबिलिटेड प्रॉब्लमैटिक हो, सेवेंथ का नवमांश लॉर्ड भी लेट्स से लग्न में आकर डेबिलिटेट हो गया. मल्टीपल प्रॉब्लम, देन विल बी लाइक हाँ, वी आर श्योर. एंड दशा भी लेट्स से शादी के टाइम पे उसके जस्ट बाद राहु की दशा स्टार्ट हो रही है. जस्ट बाद. देन विल बी हाँ, लाइक ओके, केयरफुल, टेक अ स्टेप वही तो अब बैक. शादी, हाँ, हाँ, शादी करेगा तो राहु या तेरे को नचा देगा। या फिर या देन आई विल से वेट, डू इन द राहु दशा. राहु की दशा हाँ, आने के बाद शादी करो, उससे पहले मत हाँ, करो. राहु की दशा में शादी करोगे तो लंबी चलेगी, राहु की दशा से पहले शादी करोगे तो टूट जाती है. और राहु की एंड में भी शादी करोगी तो भी दिक्कत आ या जाएगी। या सो इन दिस बट वंस इट हैज पर्सनैलिटी इज़ चेंजिंग, नो? यस, दैट्स यस. व्हेयर दैट तो दैट दैट क्रिएट्स दशा प्रॉब्लम। का कपल ऑफ इयर्स निकलने दो एंड देन शादी करो. सो दैट्स व्हाट इट इज. सो मंगल दोष आई स्टिल कंसीडर इट एज वन दोष ओनली, राइट? इट इज नॉट द फाइनल कॉल. इट इज वन दोष ओनली. And Mangal dosh also, it's in present in the eighth, right? It's not a big deal. मतलब I हुँ। don't consider it as a huge deal. I have seen, seventh, eighth में मंगल present है, लोगों की शादी Have अच्छी you हो रही done है. any research on such charts where partner just got married and then one of the partner committed suicide or हुँ, like died in some हुँ, हुँ, uh, unnatural death or accidents? हुँ. Just like within either the same day death or within a year, not For even me, completing 1 year. Yeah. if I have seen a chart in which the marriage was about to happen and the partner died. They had their Mm. रोका done and everything. They were planning and उन्होंने शादी के कपड़े वगैरह खरीदना शुरू कर दिए थे. They were very much into each other. And before they could get married, the partner died. उसमें मंगल दोष नहीं था. So I Okay. wouldn't, and apart from that, I've not seen much of the cases where it just happened. So I cannot come to a conclusion. But I have read the book by this. What was the name of the author? I actually mentioned it in one of my video as well, in which she has done a details on Mangal Dosh and how she has also mentioned कि मंगल दोष ना होते हुए भी situations हुई हैं बुरी, मंगल दोष होते हुए भी कोई situation नहीं हुई है बुरी. And that depends on dasha. That is important. Dasha Dasha is is very important and Gochar is very important. People overlook Gochar a lot. Gochar is crazy, crazy important. Gochar, okay. So Gochar effect on dasha, right? How?
Gochar impacts If you are everything. going to reap good results in one particular dasha, Hmm. and if any bad gochar is coming, so that will affect minutely, not on a big level. No, What is your say here? no. Gochar is more important than Dasha. Oh, okay. Yes, but Can how you people look explain at here, like Gochar how? is how people look at Gochar is a problematic situation. People do not look Gochar in completion, right? So Okay. if and one of the most common problematic situation with Gochar is Sada Sati, and you know, so Gochar में Sada Sati is the transit of Saturn over Moon, right? Saturn Moon के ऊपर Correct. जा रहा है, that is what. But Saturn Moon के 12th, first or second से जा रहा है, that's a problematic situation. Similarly, Jupiter 12th और first से जा रहा है, तभी problematic situation होती है. बट लेट्स से सैटर्न लग्न से 12th में है या फिर मंगल से Mm. 12th में है, इट विल गिव डिफरेंट रिजल्ट. अब मून और मंगल साथ में बैठे हैं, तो सैटर्न सिर्फ मून के ऊपर से जा रहा है, मून और मंगल के ऊपर से जा रहा है. मून मंगल दोनों पे से जा रहा है, सर करेक्ट। राइट, so how will you calculate that? So you have to take into consideration moon and mangal both now, right? So to come to this, and let's say moon mangal jupiter एक साथ हैं, and now saturn is going right over that. So now there are three planets which is transiting over, so you तब cannot तो come बहुत carry ज्यादा just साढ़े प्रॉब्लम सात. करेगा। So no. So देन what it does it now, obviously it's a very simple method that they have mentioned, all the rishis. Just look into your ashtak work. So ओके। in ashtak तो work, फॉर ऑल द ट्रांजिट्स नहीं, दो आई फॉलो अष्टक वर्क yes, ट्रांजिट्स, for राइट? कि all the वो transit look प्लैनेट into ashtak कितना work. रिजल्ट, कितना पॉइंट्स दे रहा है Yes, पर्टिकुलर हाउस में, दैट्स हाउ yes. So if वो द you the प्लैनेट रिप्रेजेंट। method of calculating the point is this only, right? So gochar, the word gochar is the word used for the transit of planet through moon, from the perspective of moon, right? But ashtak ओके। work is the transit of planet from perspective of every other planet, right? That is why it is ashtak work, from lagna and from seven planets. So हम्म गोचर जो है वो अष्टक वर्ग का एक 1/8 पॉइंट है, पार्ट है, right? So why calculate just 1/8 part when you can completely, like, you can calculate the whole part as well, right? करेक्ट। So this is ashtak work, this is gochar, right? Gochar is part of ashtak work. कैन यू एक्सप्लेन? मैंने एक चार्ट खोला तुम्हारे सामने, देखो। Chart साधु, अरे इधर लो ना यार, कहाँ तुम जा कहाँ से रहे हो? दिखेगा मुझे? इधर देखो, देखो स्क्रीन कहाँ? पे दिख रहा है, Yes, ठीक है? this is hmm, ठीक है, this सो ये is हमारा the भिन्नष्टक वर्ग एंड hmm, लेट्स से ये हो गया, किसी का भी ले लेते हैं। okay. सो लेट्स से मार्स, Let's say Mars का लेते हैं, ठीक है. ठीक है? तो Hmm. अब मार्स इज ट्रांजिटिंग हियर, दिस इज द लग्न, Okay, right now Mars is in okay? Cancer, right? Let's get into where is हाँ, Cancer. सो कैंसर, it's transiting over the lagna. Lagna is in Cancer, right? So this is giving point One, number 1. one. So that means लग्न में कैंसर के ऊपर से जब मार्स ट्रांजिट करेगा, सो गोचर गोज ओवर राशिज, राइट? सो जब Mm. मार्स कैंसर के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, तो इट विल गिव यू वेरी बैड पॉइंट्स, वेरी बैड रिजल्ट्स. सो नाउ लेट्स से On the you are health part, no on the part that Mars impacts in your chart. So let's say if you are looking for work and उसका 10th lord for Mars example, है, it is 10th Lord here. Let's say 10th lord here. है ना मार्स, हाँ हाँ. So, सो एंड जस्ट लाइक 10th Lord. इन अ वेरी सिंपलिस्टिक मैनर, मंगल 10th लॉर्ड है, तुम्हारा वर्क को इम्पैक्ट कर रहा है. सो नाउ जब वो Mm. लग्न से जाएगा, तुम्हारा वर्क से मन उठ जाएगा, राइट? Okay. बिकॉज Okay. मंगल तो तुम्हारा 10th लॉर्ड है प्राइमरीली, राइट? तो Mm. तुम्हारे वर्क को Mm. इम्पैक्ट करेगा. नाउ अब वर्क को इम्पैक्ट करने वाला प्लैनेट एक बहुत नेगेटिव सिचुएशन में चला गया है, Mm. तो वो तुम्हारा लाइक तुम्हारा वर्क में मन नहीं लगेगा, राइट? Mm. एंड जब वो बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में आ जाएगा, लेट्स से इन दिस चार्ट इट इज वेयर इन 8th हाउस, आई थोड़ा पास लेकर थर्ड आओ. थर्ड 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 में है थर्ड, ना? यस, थर्ड में है, 7th में, या थर्ड में है, 7 यस. नंबर है, और थर्ड सो में यहाँ है वर्गो, केतु यस, के ऊपर से केतु के पास, ट्रांजिट कर रहा है। एज सून एज इट ट्रांजिट ओवर केतु, जब when मंगल केतु के ऊपर से ट्रांजिट करेगा, द रिजल्ट्स विल बी इमेंसली पॉजिटिव in terms of the Mangal area, right? Now, this is one planet we have seen. At the Mm. same time, Moon is also transiting somewhere, Sun is also transiting somewhere, Jupiter, Saturn, all of them. So you have Mm. to take all 8, Mm. right, together, list them down, and calculate a total in the end. And then commit कि ये Mm. पॉजिटिव टाइम है या नेगेटिव टाइम है. And once you have figured that So out, that will be positive time for profession, right? Yours. just from the aspect of Mangal,
उसके साथ अब तो बाकी हम्म 9 बाकी रिमेनिंग प्लैनेट तो देखेंगे ना हम, हम्म राइट? दिस इज अ चार्ट ऑफ ओजस एस्ट्रो, मेरा नहीं है भैया। मैं 26 अक्टूबर को पैदा हुई हूँ। तारीख Yeah. तारीख नहीं है, दूसरी है ये। So this ओके। is this is this is why I suggest कि अष्टक वर्ग is very very important. एंड अब जैसे ये ट्रांजिट होने वाला है लाइक दिस Hmm. स्पाइसेस Saturn के and अंदर, Saturn का, yes. मार्च 2020 29 मार्च को पांच छह Yes. प्लैनेट्स जो Hmm. Hmm. खेलने के लिए आ रहे हैं। सो व्हाट इज योर कॉल, लाइक यहाँ पे हमको सारे सेपरेट प्लैनेट्स को देखना है ट्रांजिट में इन द विद द सेम मेथड, और हाउ इट इज गोइंग टू अफेक्ट व्हेन दे आर इन ग्रह युद्ध? So what is going to happen is primarily a lot of YouTubers are going to make a lot of videos on that. That's the first thing that is going to happen. ये Yeah. That is one thing you're gonna say, right? See, look, Astro, we are Jyotish, we can tell this is going to happen. भविष्य प्रेडिक्ट कर रहे हैं हम कि बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बनाने वाले हैं। हाँ। But ठीक है। coming to real point, this means हाँ। nothing. This will mean हम्म totally different for different people. So आपका हम्म let's say मून Pisces में है, just an example, right? आपका मून हम्म Pisces में है, now Saturn मून के ऊपर से ट्रांजिट कर रहा है। बट लेट्स से किसी और बंदे का मून Pisces में है, बस मंगल भी है, एंड थर्ड बंदे के लिए मून Pisces में है एंड मंगल वर्गो में है, राइट? आप आमने-सामने हो गया, राइट? हम्म सो नाउ इन तीनों के लिए मून सेम पोज़ीशन पर ही है, राइट? बट मंगल एक में नहीं है, एक में साथ में ही है, एक में ऑपोज़िट में है। तीनों के लिए अलग डिफरेंस आएगा। बट मोस्ट ऑफ द हम्म वीडियोज़ यू विल सी कि आपका मून के ऊपर से ट्रांज़िट कर रहा है, सो सेम रिज़ल्ट बोला हम्म जाएगा सबके लिए, हम्म। राइट? व्हेreas तीनों के लिए टोटली डिफरेंट रिज़ल्ट आने वाला है। So now you हम्म have to consider all of these factors as well. And now let's say Jupiter आपका Aquarius में है एक का Jupiter Capricorn में है, एक का Jupiter Sagittarius में है। So Saturn is transiting second, third, fourth from Jupiter's, right? So उसको भी तो हम्म कंसिडर करना है, सिर्फ मून को थोड़ी कंसिडर करना है। हम्म। जुपिटर सेकंड जा ये रहा है, तो थर्ड जा रहा है। अलग सब्जेक्ट बनने वाला है भाई, बालकों ट्रांजिट पे सब अपनी So this is प्रश्न why क से you लेके have to, बैठना, yes. दिविशत को दोबारा हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांजिट पे। So this is why स्पाइसेस transit वाली is ट्रांजिट पे डिस्कस करेंगे। the Pisces वाले पे सबसे बहुत सारे पहला वीडियो बना। वीडियो उनसे से बनवाएंगे, बनाओ। I tried making a video, people found it very difficult. I put a video साढ़े छाती के तुम ऊपर तुम यहाँ आना, ओजस एस्ट्रो पे बनाना, यहाँ पे बहुत समझदार बच्चे आते हैं, and सब people were like समझेंगे। ये कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हो रही है, हमसे नहीं होती है। And I was like okay नहीं fine, नहीं, let's यहाँ पे लोग पता है लाइव hmm. में नॉर्मल हाय हेलो करने के लिए भी नोटबुक कॉपी लेके बैठते हैं, पेन और नोटबुक, कि अगर कुछ ऐसा बोल That दिया is जो something. कैलकुलेट करना पड़ जाए तो ऑन द स्पॉट पेपर Quickly पे होना लिख चाहिए। क्विकली। हाँ, people are commenting we should एक बार quickly go, मैम को देखकर सर लगता है। टॉक क्वाइट कॉम्प्लेक्स, मुझे एक पॉइंट इसका कॉम्प्लेक्स नहीं लगा, Because you वेरी know it ना, लॉजिकल। because you understand astrology in very detail, that's why. जोश कह रहा है हम संभाल लेंगे भैया, आप मोर्चा उठाओ, हम आपके साथ हैं। आई एम गोइंग हाँ, वो समझ रहे थे पॉइंट कितना अगर है। कोई प्लैनेट बिलो 5 डिग्रीज़ है और रेट्रोग्रेड है तो उसको पीछे वाले ग्रह घर में मानते हैं क्या? नहीं। ओनली इन इफ यू आर ओनली सजेस्टिंग भृगु इफ यू यूजिंग भृगु मेथड देन अदरवाइज़ नो। उम, तो ये तुम वैसे कौन सा मेथड ज्यादा यूज करते हो, ये ऑल ऑफ पराशरी, देम, भृगुनंदी ऑल ऑफ देम मैट्रिक्स? साइमल्टेनियसली। तुम भी खिचड़ी बनाते हो मेरी तरह? सो आई लवली। एज़ आई सेड ना नोट्स में आई इफ यू सॉ कि मैंने वो भी एरोज़ भी मार रखे हैं, बट देन मैंने आत्मा कारक, अमात्या कारक, उपपा देन वो भी कैलकुलेट कर रखे हैं, राइट? सब एंड देन फिगर। गोचर भी यूज़ कर रहा हूँ मैं इक्वली। सो आई एम यू एंड प्रोग्रेशन भी यूज़ कर रहा हूँ इक्वली। सो अगर सबसे सेम आंसर आ रहा है दैट मीन्स क्या तुम क्या तुम शुक्रवंशी एस्ट्रोलॉजर हो हैं? शुक्रवंशी हो तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक सो। शुक्रवंशी। वीनस बेस्ड एस्ट्रोलॉजर हो क्या तुम? या ही हैज एन अमेजिंग एनालॉजी। या हाँ, सारी चीजें ही लिख डाली, वी कैन वर्क ऑन व्हाट ही टोल्ड टुडे। हाँ करो मोहित, होमवर्क है तुम्हारा ये। हाउ Brigu astrology also do you use? Yuvank is asking. आई डू हाउ टू नो मुझे प्लैनेट भृगु एस्ट्रोलॉजी टफ लगती है, बिकॉज़ क्योंकि मैं उसमें क्वेश्चन नहीं कर पाती, टू बी वेरी सो फ्रैंक। आई विल टेल यू एक होता है ना कि फलानी इस एज पे दिस इज गोइंग टू हैपन एंड आई एम लाइक व्हाई? ओह! आई विल टेल यू उसका सिंपल मेथड क्या है। इट्स अ वेरी क्विक अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्ट प्रोग्रेशन।
कि जुपिटर उस एज में कौन से हाउस में होगा, साइमल्टेनियसली सैटर्न उस एज में कौन से हाउस में होगा और किस-किस चीज़ को एस्पेक्ट कर रहा होगा। दैट्स इट। इट्स लाइक वेरी सिम्प्लिफाइड, मैंने बहुत सिम्प्लिफाई कर दिया। अकेले में I'll give कोई नहीं, I'll I'll अकेले में I'll समझा देना yeah, कि समझ I'll में give नहीं you आ a रहा है। PDF. I'll give you a PDF. भृगु इज इजी भैया, मंडी गुल्ली का ओपिनियन, गुल्ली का Mandi मंडी में। Gulika Mandi par I check at Mandi, okay, and that too just हुँ, when the cases become very difficult, and that Mandi का जो major influence है, it comes from South India, right? कि उनकी हुँ, एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा यूज़ होता है। सो आई चेक इट देन कि ओके इफ समवन आस्क्स कि मुझे नज़र लगती है बहुत जल्दी और इस मेरे पर कोई किसी ने टोना-टोना तो नहीं करवा रखा। सो उसके जितने भी योग हैं दैट कम्स फ्रॉम मांदी। राइट? क्या पे लग्नेश के साथ, नवमेश के साथ मांदी तो नहीं अच्छा, है, सैटर्न के साथ या राहु के साथ मांदी तो नहीं है इन 9th 5th। ऊपर के चक्कर जिसे कहते यस, हैं। तो उसमें यू हैव टू लुक एट मांदी। मेरे घर में निकले हैं, एक फैमिली के सब सारे मेंबर्स पे किसी पे जिन निकला है, किसी पे कुछ निकला है, कभी तो किसी पे कुछ उनकी निकला चार्ट चेक करो एंड जस्ट सी कि उनका मांदी कहाँ पर है। फ्रॉम देयर यू विल गेट एंड आई विल सेंड यू द योग्स जो लिखे हुए हैं ना इन क्लास 6, द है। योग्स फॉर दिस हुँ, एंड यू कैन आल्सो देयर आर योग्स टू नो द जेंडर ऑफ द जिन और एनीथिंग, देयर कास्ट, फ्रॉम वेयर दे केम, लाइक ऑल ऑफ दैट। so बट how okay, so I'll it's like send you. Pluto is the one, No, no. So no? I'll Pluto is send you. No, no, ma'am, this is different. I'll send you the PDF for that. Those pages. तो फिर check करना if you can हुँ, get the charts of those. डेटा तो मैं लेके आ जाऊँगी, रिसर्च करवा देना बस। भैया मेरा Yes. मांडी विद लग्नेश प्रोन टू ब्लैक मैजिक, देख लेना तुम्हें पता नहीं तुम कबूतर बन जाओ सारा एक रोड तो पे ना घूम the रहे हो। people, that's the thing. That is the thing. If you say these things, and I avoid saying these things, people jump to conclusion. Lagnesh with Mandi, हाँ, that's not हाँ, enough. One yoga is never enough. I was हाँ, talking in वही the terms that you should know these yogas. So when you are calculating, you can use as a additional tool, right? अगर हुँ, तुम्हारे पास, in a painting palette, if you have extra colors, you may use it. Does not mean you are going to use only that, right? You ट्रू। can use that as well. नहीं हम Uh, तुम्हारे पे भूत का चक्कर होने नहीं देंगे, टेंशन मत लो तुम। बंगाल भेज देंगे तुम्हें। मांडी गुलिका इज़ मुझे गुड इन 11th हाउस? क्वेश्चन मार्क। again, I will not tell this, but otherwise you'll jump to conclusion कि हाँ, अरे मेरा तो है, I'm very happy. No, don't do that. ओह वाओ! नो Genuinely, पर्सनल okay. क्वेश्चंस गाइस। No, it is अच्छा कन्वर्सेशन। तुम बोर तो नहीं हो रहे हो ना? पता पड़े नहीं, नहीं, बोले नहीं, ये नहीं. पकड़ के बैठ गई है मुझे इसने नो, नो, दिमाग आई खराब जस्ट कर डोंट नो दिया कि है। मेरे फ़ोन में बैटरी कितनी है, दैट्स ऑल दैट आई वांट टू नो. अभी है, इट्स फाइन. व्हाट इज़ द टाइम बाय द वे? इट्स 11:31. पीपल You look मस्ट बी very गेटिंग बोर्ड. strong Marjorie to me, also wearing green scarf। अच्छा प्रश्ना पे तुम्हारे क्या विचार है? प्रश्न पे आई हैव मल्टीपल विचार्स. वन तो दे इज़ द दो एक-एक सिंपल. करके। सो प्रश्न के लिए इफ यू आर इनटू प्रश्न, देयर आर at least what I know, 3 different schools of Prashna. 3 भी नहीं, हुँ, I would say 4 different schools of Prashna. One is based on Shat Panchashika, okay, which क्या? talks about शतपंच। Shat Panchashika, that is 65 shloks. Shat Panchashika or हुँ, 56 shloks, not sure. ओके। So it talks about Kendra, right? And हुँ, how you get answers based on the Rashi, the Lagnesh की राशि कौन सी है, चर है, स्थिर राशि है, द्विस्वभाव राशि है, हुँ, and Lagnesh हुँ, means yes, and Unnati, हुँ, Vritti, and Chuti and Pravas, based on those houses, you get an answer. It's a very different method, हुँ, right? हुँ, One is that. Second is Tajik Nilkanthi, right? In that, you हुँ, have to understand the terminologies of Tajik. हुँ, It is a little, well, I am still in the process of Tajik method to understand Tajik method क्योंकि उसकी terminology थोड़ी सी difficult है for me because उसमें हुँ, any question is answered based on कि कौन से planet ने किसको cross कर लिया है and then you'll get an answer या फिर इस planet ने इसको cross करा है या it is just about to cross this and you know which house and all. So it's a little difficult for me. Third is हुँ, the Prashna Marg, which is the South Indian method, हुँ, हुँ, करेक्ट। which is actually the basic method which most of the astrologers would use. It is यूज़ just हाँ, creating an arud. Arud is not the arud lagna. Creating an arud is creating a chart on the spot, and then answering similarly as you would answer any other question based on a normal chart. हुँ, 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 And similar method is also Parashari as well. So if you are using a Parashari method, it is also somewhat similar. So technically हुँ, देखा जाए तो 3 हैं, maybe 3 or 4 you can say that I know of right now. Out of these, I can be a little bit more sure on
the I use both of them, Shat Panchashika wala method. I am reading Krishniyam these days, Mhm, and I think I find it's way complex at some points where it is challenging Parashari. mhm, So mhm, maybe because I'm using Parashari since long, अब वो mhm. जब thought challenge हो रहा है, so I'm like, अब इसको कैसे use करूँ? So you have to, combine those, I would say. Yeah, Combine those and use both of them. I am saying let's see everyone has बाकी own और perspective, भगाते हैं. sir, so no worries, sir. We are रॉकी with गलत you. जगह पे गलत सवाल कर रहे हो तुम. What is Ritvik with me? Ritvik is saying that he's with me. For what? Did I say हाँ, something wrong? Everyone has own perspective, sir, so no worries. I don't know what did I say. When I really hear emotion, you go, same thing happened with बहुत me. पीछे चल रहा है अभी डिविजन. मैं जब तक पानी Yes. लेके आ रही हूँ. ठीक है, फिर तुम I 64th नवाज के बारे में बताना कुछ. 64th now. Okay. हाँ, Honestly, brand is positive of 10 and 12. Hi. Finally, hello. I have taken over now. It's going. I should read. It's a good thing that we can argue over things and logic conclusion. Grah Parivartan. Any insight? It's great. Grah Parivartan is great. Positive yoga. Mercury अच्छा है. Okay, thank you. That's how R&D work. Mars debilitated in D1 but exalted in D9. Yes, exalted in D9 Mars and debilitated in D1. It will give good results because exaltation in D9 is way more important than debilitation in D1. So that will और give you अगर वही great. मार्स कंबस्ट है D1 में, Then yes, then it is not great. It is combusted it is just weak. Mars It is just and going then to get exalted in D9. exalted in D9 is always great. Combusted in D1, Hmm. exalted in D9. हाँ, So, कंबस्ट है तो कोई बात नहीं ना, थोड़ी एनर्जी तो कम हो रही है. but okay. So combust में एनर्जी कम हो जाएगी और exalted में Yes. एनर्जी वापस आ बैलेंस हो जाएगी. जाएगी. Yes. ओके. भैया के गाल पिंक है. ओह माय गॉड! भैया के गाल पिंक है, फॉरेनर लग रहे हैं. भैया वाओ! के तुम लोग मेरे नजर गाल लगा पिंक दोगे है. भैया नो, के, नो, मेरे को नज़र नहीं, द पीपल आर नोटिसिंग दैट्स द क्वेश्चन. मैं सरसों का तेल से उसको बोलूंगी ऐसे उतारते हैं नजर, ये बोलना ओह! होता है ऐसे करके अगरबत्ती जलानी होगी. दैट आई नो. कुछ बोलना भी होता है. हाँ, आई नेवर से समथिंग सरसों के तेल से हाँ, उतारते हैं. आई जस्ट नहीं से नहीं बोलना भी होता है भाई, व्हाट डू बोलना यू से? पड़ता है. मैं ऐसे बता दूंगी तो फिर तुम सब मतलब हम अंदर उतार की लेंगे बातें नज़र. बाहर बता दोगे. इट्स फाइन. आई एम वेरी ओपन विद दैट. नहीं तुम तो इतने सारे लोग हैं, सबको पता पड़ जाएगा, मेरे सारे मंत्र पता पड़ जाएंगे, मैं तुम्हें अकेले में बताऊं. ओके. बिकॉज़ आई जस्ट भैया से का नजर उतार देंगे तो बोला. व्हाट आई से इज़ कोई भी काली थैंक यू नज़र, बुरी सो नज़र तो मच वो खोल कर दे. आदित्य. हाँ, 64th नवांश क्या है. अच्छा, इसमें एक एक और सवाल पूछ रहे थे यार ये लोग. एक तो 64th नवांश, वर्गोत्तम तो तुमने बता दिया, रेट्रो भी हुँ. तुमने बता दिया, कंबशन भी बता दिया. दोबारा मेरे से अगर ये क्वेश्चन पूछ लिए किसी ने, कौन-सा? ठीक है, नहीं, मैं दे विल आस्क यू, ये इट्स फाइन. Lightning Lord combusted, please share some knowledge on it. तुम बहुत दूर आए यमदूत. Can you share your कंबशन. ID handle, please? My ID अच्छा, handle. एक ये वास्ट्रोलॉजर है, Yes, Astrologer12 on Instagram. वीडियोस मिल जाएंगे. ये जो बीमारी वाले चार्ट्स होते हैं, हुँ, जो पैदाइशी बीमार होते हैं, हुँ. what is the one thing that you have found there? Like their Moon, Lightning Lord is weak, not Love and Lord, Moon is Moon weak, is like weak. लव एंड लॉर्ड का हम्म, वीक होने से Moon. आप पैदाइशी बीमार नहीं होगे, मून के वीक होने से 8th हाउस में प्रॉब्लमैटिक होने से लग्नेश के दोनों साइड नेगेटिव होने से हो गए. So if you are looking for पैदाइशी बीमार, you have to use the Baladhishta. Okay. All the rules Okay. detailed in Baladhishta, you can use that and you'll get an idea. हाँ, but Hmm. any other बीमारी that is coming in, just look at 6th lord wherever it goes, or any house specifically getting the impact of Mangal, Surya, Saturn simultaneously, उस house से related part. This was one of my खराब हो जाता question है. early on. Yeah, this was my question early on when I was starting astrology. कि you have to look at house और राशि. कि second राशि impacted है या second house impacted है तो कौन सा देखोगे, right? So I have figured out house primarily. Secondarily, you will see Rashi, but primarily you see which house is impacted. Hmm. Because sometime होगा Okay. तुम्हारा 10th हाउस impacted है, but 10th हाउस में टॉरस है. So तुम कौन सा देखोगे? आंखें गई, आँखें खोपड़ा दिखे गया, या या फिर टांगे गई. टाँगे गए. एग्ज़ैक्टली दैट विल बी लाइक तुम क्या बोलोगे किसी को?
So primarily start from टांगे. That is the major problematic. ये Second हाउस house को पहला फिर है ना? हाँ, house is the main thing here because हुँ, results हम house के हिसाब से देते हैं. राशि के हिसाब से हम देखते हैं कि वो रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, राइट? तो हम रिजल्ट्स हाउस के हिसाब से देखते हैं. दीपांशु सर का ही तरीका सिंपल है. व्हिच वन तरीका सिंपल है? अरे ठीक है, जो जिससे कनेक्ट कर रहा है, उसकी इच्छा, चाणक्य सेड चाणक्य सेड दीपांशु सर का ही. चाणक्य, ये सब नकली नाम बना के आ गए हैं सब, यस. चाणक्य। आस्क हिम अबाउट टिपिकल केस ऑफ सुसाइडल टेंडेंसीज। Oh yeah, that is a. Do you want me to uh, tell it, or do you want me to give you a reference? The reference for this you can find, and it's a very modern reference. B.V. Raman book. Go into his book on 300 important combinations. Very good book. You'll love it. हुँ, And in that, there's in the end you will see Mati Brahma Yoga, and under that हुँ, you will uske next you'll see suicidal tendencies as well there. And मति in ब्रह्म युग। हुँ, Mati Brahma Yoga, and you know what? You read it, हुँ, and I'm pretty sure you'll come back with questions because तो तुम that चाहते हो कि will. हम पहले पढ़ के फिर पहले बता Yes. दो? No, I'll tell you why I'm saying that, because हाँ, that is one योग जिसके ऊपर मैंने इतने सारे नोट्स बना के उसमें चिपका रखे हैं अपने बुक में. And it took me long अच्छा, time to actually come to this point. Whatever you have thought till now, you will start questioning हुँ, everything. So that can be your entry into astrology. If someone is हुँ, into astrology, your entry into research of astrology can start from Mati Brahma Yoga. So read that and you will question ये मति planet क्यों? ये ब्रह्म युग। planet क्यों? Why not this planet? Right? So that is why when I made a video ke not video actually made a post ke moon is not for your emotions. It also came हैं? from there. Moon is not for emotions, right? It is not a planet for emotions. Moon is a planet for mind. Now most of the people get it wrong. Most of the people talk about moon being the planet of emotions. मून इज़ द माइंड, यस करेक्ट। And but if you like अरे moon आपके इमोशंस के साथ खेलेगा, आपको हाइज एंड लोज आएँगे इमोशन के, all of that. इमोशंस That कम्स फ्रॉम वीनस। emotions come from every planet. Every planet has its own ओके। emotion. Coldness, हुँ, anger, ego. Every planet has a different emotion. Moon is just हुँ, how cognitive you are, how हाउ योर analytical. माइंड Yes, टेक the दोज़ information. इमोशंस। Yes, how your हुँ, mind takes हाउ information. यू फील इट, लाइक इफ इट इज़ गुड और बैड। Yes, no, हुँ, no, 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 no. That comes from Mercury and Sun. How you feel it, it's good or bad. What is the point of Moon is analysis of information. हुँ, So, हुँ, let's say you touch a hot pan, right? हुँ, You realize, "Arey, it's hot," right? Just this information, "Arey, it's hot." That is Moon. Oh, I do not like hot. That is Mercury. that So it's a transition from. Mercury creates a thought Yes. process, a pattern of So thinking. this is a very this might come as a little new to people if they have been taking this thing as moon as emotions. Okay, moon is not emotion. So we have five gyanendriya as in your senses, right? From your हुँ, gyanendriya, you take information and then your man analyzes it, sends it to your buddhi, right? So your buddhi is buddha, your mana, the mana karak is chandra. So मैंने सोचा yes, so था। any हुँ, information you say take from Gyanendriya, let's say you look at something, right? Now you have just figured it out. Okay, I am looking at something. So from there, you are able to figure out that you are looking at something. That is what your moon does. And then, oh, I like it. That is what your Mercury does. So emotion technically comes in Mercury. And why I said it, Mati Brahma Yoga will give more answers to this, ओके। right? जाके सब लोग रिसर्च करना, मैं भी करूँगी मति भ्रम योग। So it will give you. विष And योग, व्हाट इज़ विष दोष? Wish Saturn moon Yoga. coming together. No, please. Again, jumping to conclusions. Wish Yoga, Sarp Yoga, and all of the I'm asking. does nothing. Saturn moon साथ में है. They can be good and bad depending on कौन कौन से lords हैं वो. हुँ, Right? Lordship देखनी है ना उनकी पहले positive negative है. किसी में strength है कि नहीं है. Saturn में कोई strength ही नहीं हो मान लो. ठीक है. हाँ, मान लो. तो फिर फिर क्या तो problem है?
फिर गंदा कैसे करेगा पानी को? Exactly. So let's say why? So let's say it is Lagnesh is moon. The Saturn will be your what 10th lord and sorry 7th lord and 11th lord, 7th and 8th, हुँ, sorry 7th and 8th lord, 7th एंड 8th हो 8th गया। lord. ठीक है. So and let's say Saturn is present. Saturn and moon both are present in 4th house, ओके, इन right? लिब्रा। In Libra. So now what will happen? It will not be a negative thing for you because Lagnesh, Saptamesh, or now here Moon is getting Digbali and Saturn is getting Uch. Now Digbali is always एक्सॉल्टेड। exalted. Now हुँ, Digbal is always favorable, right? Digbal always trumps Uch and Neech. डीप थिंकर बना देगा ना फिर ये? व्हाट डू यू थिंक? द I पर्सन would विल बी वेरी say I would say he'll be डीप very विद attached to mother. माइंड। Very attached to हाँ, mother. माइंड First thing will विल be गिव mother, right? रिस्पांसिबिलिटीज़। हाँ, Right? घर Super से भी attached. अटैच्ड हो जाएगा। घर से attached रहेगा. So it's not wish योग here negatively. But like if someone looks into it, अरे आपका मोन और सैटर्न साथ में है, विष योग बन गया. You have to also हुँ, have the context ना कहाँ से आ रहे हैं वो, कहाँ बैठ रहे हैं वो. हुँ, हुँ। So that is why it is a तो little सिर्फ bit. शनि ही विष बनाता है, कोई भी विष बना देता है? People can say anything. I as an astrologer, I would say for any person, these names are not important. ठीक है. हाँ, व्हाट दे आर What डूइंग इज़ is doing इम्पोर्टेंट। it? वो एक पोस्ट डाली थी ना पॉज़िटिव Yes. So पॉज़िटिव it's एनर्जी ऑफ विकार हाँ, योगा। तो इसलिए किसी के लिए भी कोई भी you can see अगर you know Jupiter and Moon हाँ, 7th में present है. Just take that हाँ। case. Jupiter, Moon 7th में present है and 7th is your Pisces or let's say 7th is your Sagittarius and 10th is your हुँ, Pisces. ठीक है? And Jupiter and Moon 7th में ही present है. And so अगर it is your Sagittarius 12, 1, 2, 3, 4, second 12, 1, 2, 3, 4. Yes. Let's say it's Pisces. ठीक है? Let's make it difficult. Jupiter हुँ, in Pisces in 7th with Moon, हुँ, हुँ। right? So Moon here would become इज़ 12 11th लॉर्ड is 11th lord 11th लॉर्ड इन is negative, 7th हाउस, right? करेक्ट। हुँ, In 7th house, so 11th lord being negative in 7th house. Now, another thing that you are going to find is your Saptamesh, is your Markesh, and when Jupiter become Markesh, present in 7th, it acts even more negative. So now your Gaj Kesri Yog becomes very negative for a person. It हुँ, will give you करेक्ट। physical problems, it will give you mental problems, it will give you so many problems. So people will say, Gaj Kesri Yog hai aapka 7th mein. But yeah, it's a problematic situation for you. Don't be happy about it. Because it is the मेक्स 11th सेंस। 11th lord and Markesh, Jupiter when Markesh, Jupiter and Shukra being Markesh, being in 7th becomes हुँ, extremely dangerous, हाँ, और right? रेमेडीज़ पे क्या बोले? चाणक्य बड़ा सुंदर सा क्वेश्चन पूछ रहा है। यू बोथ डिस्कस अबाउट योर वाइल्डेस्ट क्वेश्चन्स, रेमेडीज़ आस्क्ड इन कंसल्टेशन। Just align yourself, just accept it. Remedies is just accept it. To be very नहीं, बट true, फिर भी रेमेडी चाहिए। किसकी रेमेडी दोगे? remedy in such a situation, I'll just tell कि be careful during this time period कि अपनी health का ध्यान रखना है and see whichever house is impacted या तुम फिर कोई भी प्रिकॉशंस situation. बता रहे हो, दवाइयाँ नहीं Precaution, बता see, रहे हो। no, there is no way. No, astrology is about acceptance. It's not about changing things. It is not supposed to be known by people, हुँ, right? So तुम कुछ change नहीं कर सकते. If it is supposed to happen, it is supposed to happen. Not saying कि हाँ सब कुछ छोड़ छाड़ दो. So it is more about the निष्काम कर्म, right? You do something. So let's say अगर Krishna would have told कि यार तुम भाई युद्ध करोगे and you'll kill your father. Arjun would have been like, yeah, give me a remedy. And Krishna would have been, you know what? ये नग पहन लो, नहीं होएगा कुछ. He did not. He like तुम्हें करना पड़ेगा, but do not feel attached to it. Right? It's नहीं same as that. You have to do it. In the end, you'll have to do it. Just do not be attached to what is coming. डोंट डोंट सही है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। लाइव का रिकॉर्डिंग मिलता है? हाँ, मिल जाता है। बोली मैंने फोमो हो रहा है लोगों को, फोमो। ओह शिट! ये तो 1 घंटे से 1.5 घंटे से ज़्यादा से है। Yes. Oh कितना my कुछ God. मिस आउट कर दिया हमने।
You are saying chart by Parashari, use chapter 1 to concept also, degree, Shadbal, etc. Everything. हम्म, क्या कह रहे हो? What is the what? I forgot. ये क्या है? Shadbal, degrees का क्या role है? Like if any planet is in specific degree, how you Mm, consider that? any planet is in what? Is in? अरे different degrees में है, let's say. Oh, that is the most important thing in analysis. That is what makes your chart unique. Like, तुम पैदा हुए हो like if, versus a person born 2 minutes after you. तुम दोनों के चार्ट में hmm, डिग्रीज का ही तो डिफरेंस है. या फिर hmm, तुम पैदा हुए हो एंड अ पर्सन born next day to you. hmm, तुम दोनों के चार्ट में तिथीज चेंज क्यों हुई हैं? बिकॉज मून मूव्ड, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट yes, बहुत डिग्रीज का, तो डिग्रीज आर वेरी correct, इंपॉर्टेंट. सो टू कैलकुलेट, correct. नॉट टू कैलकुलेट, कैलकुलेट तुम्हें मिल जाएंगी. To judge Hmm, a degree, that is why the importance of divisional charts come in. Now divisional hmm, charts में उनके डिग्रीज के बेस पर उनके इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स बन जाते हैं, correct. राइट? जो तुम्हारा लग्नेश, एक लग्न में एक लॉर्ड है, लाइक लग्न चार्ट में एक लॉर्ड है, नाउ डिविजनल्स में अलग अलग लॉर्ड्स बन जाएंगे एंड दोज लॉर्ड्स विल Hmm, इम्पैक्ट दोज एरियाज, hmm. राइट? So that is why degrees are important to understand and know कि वो कहाँ पर है. But apart from that, degrees are just positions. Like technically in physical world, they're just position. So yeah, let's Okay. So degrees exalt what? के लिए What? अलग है, Cannot. राइट? देखिए अलग-अलग हाँ, डिग्रीज़ हैं, हर हाँ. प्लैनेट के लिए एक किसी का एक एक्सॉल्शन का एक हुँ, स्पेसिफिक हुँ, डिग्री है, मूल त्रिकोण का अलग है, ओन साइन तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से मून गेट एक्सॉल्टेड हुँ, 11 ठीक है? सो अब वो अगर कहीं पे भी किसी भी हाउस में सेम सेम डिग्री पे बैठा है जो उसकी हुँ. एक्सॉल्शन की डिग्री है। सो विल इट एक्ट लाइक द एक्सॉल्शन है उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा इफ इट इज सिटिंग इन द सेम डिग्री और इट इज गोइंग टू इफेक्ट ओनली इन दैट राशि? It will only affect in that Rashi because that is what is being given down, being calculated, being used, right? Or being observed. So degrees in a particular Rashi and why they're exalted, we cannot figure out, right? We don't know why they're exalted. But उनका exaltation or debilitation point और उनका degrees in that particular Rashi ही important है. किसी और राशि में होता तो that would have been mentioned कि इस राशि के इस डिग्री पे important होगा. हाँ, what you are asking that can happen in. Then how you grasp your हाँ, sorry. how you use nakshatra because nakshatra is again a part of Yes. degrees only, right? कि इतने से हाँ, इतना डिग्री तो में ये वो तो नक्षत्र है। So मतलब I consider degrees for वो तो nakshatra part. राशि भी ना, राशि में भी तो डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग शिफ्ट हो रहा है। नक्षत्र आपके नवमांश के साथ अलाइन होते हैं, नक्षत्र पद आपके नवमांश के साथ अलाइन होते Hmm. हैं। सो वो तो Correct. यू कैन यूज़ इट दैट वे Correct. एज़ वेल। बट द थिंग दैट आई वाज़ सेइंग इज़ कि डिग्रीज़, देयर आर सर्टेन एरियाज़ इन दिस 360 डिग्री व्हिच आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, राइट? Hmm. Any Vargotam area, that is important, right? Any, the Navmanshas, there are certain points which are very, very important, right? Those areas in themselves are positive, ठीक है? उसको हम एक साइड पे रखते हैं. Apart from them, अगर कोई planet अपने लिए एक positive area choose कर लेता है, which we don't know reason for that, right? जैसे sun ने अपने लिए Aries में एक area choose कर लिया, फिर Venus ने Pisces में अपने लिए एक area choose कर लिया exaltation का, ठीक है? तो वो हमें नहीं पता Hmm. क्यों क्यों कर रखा है, बट दैट इज़ द एरिया ओनली। सो अब वो वीनस किसी और राशि में जाके वो उस डिग्री पे बैठ जाएगा तो एक्सॉल्टेशन नहीं फ़ील करेगा, बिकॉज़ इट Hmm. ओनली फील्स एक्सॉल्टेशन ओनली इन दैट पर्टिकुलर एरिया। सो इट्स अ वेरी मैथमेटिकल थिंग कि दिस ग्राफ में अगर ये इक्वेशन में ये वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे ये रिज़ल्ट आएगा और यहाँ पे ये रिज़ल्ट आएगा। सो जस्ट नोइंग कि दीज़ आर लाइक दीज़ आर जस्ट वेरिएबल्स एक्स, वाई, ज़ेड। You are just putting values कि x में तुमने वीनस का ये डाला, z में ये डाला, ये डाला, and then you are getting a result which you are supposed to give to a person. It's that mathematical. So इसलिए that's why when you are asking कि degrees का क्या impact है, yeah, there are multiple impacts like degrees में अवस्थास degrees के according calculate होती है, नवमांश सारे Correct. divisions degrees के according calculate होते हैं, right? Hmm. तो एंड डिग्रीज़ के अकॉर्डिंग आपका पॉइंट सिस्टम भी कैलकुलेट होता है। सो उच्च से लेके नीच तक के जो बीच में डिवीज़न है, वो 180 डिग्रीज़ पे आता है। उच्च का अगर इफ यू टेक 1 पॉइंट एंड नीच में इफ यू टेक 0 पॉइंट, तो 180 पॉइंट्स में डिवाइड हो गया एंड यू कैन गिव इट 180 में से कितना भी पॉइंट, कि कितने पॉइंट पर है वो।
So these all calculations, obviously done in 0 and 60 के रूपा system, these are done in Shadbals. So if you are using an app, वो तुम्हारे लिए सब कुछ already calculate कर चुका है. हाँ, करने की जरूरत नहीं है, but a person should know where it is Very coming from. Because if you don't know, then you might not, So since we don't know ke Venus why is behaving so badly in uh, Leo, right? But we can calculate that thing that it is approaching its debilitation. So it is almost हाँ, ये लेकिन अगर वीनस अगर अपने नक्षत्र में बैठा है, उस डिग्री में वो इतना बेकार right. इफ़ेक्ट नहीं Now देगा। this is again a thing. This is then थोड़ी देर पहले before the call we were discussing. I was thinking about that. We're not discussing. हुँ, हुँ, नक्षत्र किसी भी planet का the lordship is based on विंशोत्तरी दशा only. So the same planet, let's say you start calculating कि Venus है या फिर let's say सूर्य है या फिर let's say Mars है, वो अपने नक्षत्र में बैठे हैं, right? And you रूलरशिप की बात कर रहे हो तुम, हाँ, yeah, विमशोत्तरी दशा के लिए, yeah. ओके। So हुँ, ठीक है। a person who does not understand this concept, so what they might do, what हाँ, pitfall they might हाँ, have हाँ, कि उनके लिए क्या प्रॉब्लम होएगी? अब हाँ, उन्होंने देखा कि सूर्य अपने नक्षत्र में बैठा हुआ है, right? And they made a mental note कि सूर्य पॉजिटिव हो गया. But हुँ, they हुँ। have also learned recently, let's say Ashtotari Dasha. Just saying, right? हाँ, वही आ गया Eh, उसका क्वेश्चन, अष्टोत्तरी दशा में भी सेम होएगा। तो वही अब उन्होंने सोचा अष्टोत्तरी दशा हुँ, एंड नाउ बिकॉज़ उनके हुँ, मेंटल नोट है कि सन पॉजिटिव है एंड नाउ दे आर हाँ, सीइंग अष्टोत्तरी दशा, राइट? बट नाउ अब अष्टोत्तरी हुँ, दशा में तो सन अपने नक्षत्र तो नहीं है, राइट? हाँ, तो करेक्ट, फिर वो आंसर नहीं निकाल पाओगे आप। सो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द हुँ, बेसिक बिकॉज़ वो विंशोत्तरी दशा में अपने नक्षत्र में कह सकते हो। एंड करेक्ट। वो भी नहीं कह सकते हो टेक्निकली तो लाइक अगर हम बहुत ही टेक्निकैलिटी में हैं, तो वो भी नहीं कह सकते वो हो। बेसिकली आपके जो दशा सिस्टम है विमशोत्तरी की, उसके उसको लिए कैलकुलेट असाइन्ड है करने के या लिए कि मून मून एग्ज़ैक्टली, का प्रोग्रेशन देखने के लिए। एग्ज़ैक्टली जस्ट टू हुँ, हुँ, कैलकुलेट द डेज़, टू बी एबल टू कैलकुलेट कौन-सी फर्स्ट दशा होनी है, कितने डेज़ के लिए होनी है, दैट्स हुँ, ऑल। हुँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। So this is why, हुँ, people when they say कि अरे, moon is in its own nakshatra or sun is its own nakshatra. And one of the very weird thing that I read was I think it was in J.N. Bhasin's book. And हुँ, he's great because he wrote the translation of Sarvarth Chintamani and very nice, right? But in his translation of Sarvarth Chintamani only, he used this thing as a reasoning which he should not have done. हुँ, He used this thing as a reasoning ke, Sun and Ketu are close. They behave positive because Sun gets exalted in Ketu nakshatra, right? Sun जब exalted होता है, the first nakshatra that belongs to Ketu. So Sun and Ketu should be friendly to each other. And this thing I've ओके, heard after that, I've heard multiple times from people. I'm like, Sun Ketu के नक्षत्र में हुँ, exalted नहीं होता है. सन एरीज़ के 10 डिग्रीज़ पे एक्सॉल्टेड होता है। इट्स नॉट केतु का करेक्ट, नक्षत्र, इट्स जस्ट करेक्ट, अश्विनी करेक्ट, करेक्ट, नक्षत्र, नॉट केतु का करेक्ट, नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र विल शिफ्ट अष्टोत्तरी दशा में तो केतु का नक्षत्र भी नहीं होता है। सो लाइक और दशाओं में शिफ्ट हो जाता है। तो इफ यू आर सेइंग इट इज़ उसका नक्षत्र देन दैट्स रॉन्ग। वो अश्विनी कुमार का नक्षत्र है। दैट नक्षत्र बिलॉन्ग्स टू हुँ, अश्विनी कुमार और उसमें सन डीटीज़ हाँ, एक्सॉल्ट डीटीज़ प्लेज़ एन अगर इम्पोर्टेंट उसमें रोल, सन करेक्ट। एक्सॉल्टेड हो रहा है एंड इफ यू वांट टू कनेक्ट एट ऑल, इफ यू वांट टू कनेक्ट एंड दैट इज़ आल्सो स्ट्रेचिंग. If you want to connect, हुँ, you'll see Ashwini Kumars are surgeons and Sun in its Leo sign associated medicines. So from there, if you are trying to connect with some story, you can connect with that. But there's no point connecting. You just have to accept certain things. कि हाँ, वो अश्विन कुमार का नक्षत्र है. It's not of Ketu, and it is Sun exalted. होता है, that's it. So वो चीज is like and you have to understand certain things like the astrology students or people getting into astrology have to understand. हुँ, हुँ, हुँ। But yeah, I think we are just getting too much into this. अष्टोत्तरी में केतु होता ही नहीं है। हाँ, वो खा गए Yeah, हैं केतु को। हाँ, वो होता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली। हुँ, so this is saying राहु केतु साथ में people are है। asking people अच्छा है, ग्रेट डिस्कशन। तुम जैसे किताबें ना मिला करें तो तुम मुझे बता दिया करो, हम लोग लाइव आ जाया करें।
ठीक है? मैं तो तीनों टाइम लाइव रहती हूँ। So, I was telling na कि we can do a video, and I think this is the kind of video we've already done now. Where we are thinking of doing a video on. तो I was नहीं, thinking of वो तो अलग करेंगे हम yeah. डेडिकेटेड टॉपिक पे, तो लाइक वी केटर्ड द क्वेश्चंस ऑफ We जनता। forgot to ask people. जो उन्होंने बोले हैं हम दिस उनके इज आंसर दिए ही नहीं. दिस इज जन ये जनता, ये जनता जनार्दन के साथ में बैठ हाँ, करके हमने वार्तालाप किए हैं। I'm just quickly reading तो the experience. मैं भैया मैं एक्सपीरियंस में ही बोल रहा हूँ. Exchange of planets are good, although these are Prashna techniques. Very less mention of upgrades in BPHs two strokes only. Yes, 64th नंबर के बारे में क्या विचार है पर क्या विचार है कुछ भी नहीं. What if both are मुझे together? लगता है भैया आप आया करो प्लीज प्लीज, मजा आ जाता है। सर exchange. गमोरा प्लीज सेव दिस लाइफ। मैं एक्चुअली क्या करती हूँ, लाइव आती हूँ डिलीट कर देती हूँ लाइव। Okay. मैंने कहा खाम का टाइम वेस्ट होगा। Oh. जस्ट नॉट टू वेस्ट टाइम ऑफ अदर पीपल आई डिलीट द लाइफ। तो बोले कि डोंट हाँ. डिलीट इट। Okay. Oh, सॉरी टू दीपांशु सर डिस्टर्ब विद सेम D9 के क्वेश्चन अगेन। लग्न से मैरिज नो मैरिज पे आपका डिसाइड कमेंट. करते हैं। Yeah, that is correct. That is a method written in classics के नवमांश लग्न और लग्नेश of नवमांश. 1/7 का एक्सेस इम्पोर्टेंट No, है। no, no, not 1/7 axis. So नवमांश लग्न नवमांश लॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है in your लग्न, and if it is strong, not strong, that determines. And one of the best thing is नवमांश शेष यानी नवमांश लग्न का जो मालिक है उसकी दशा में पार्टनर्स मिलते हैं आपको. So yeah, that is very important. नवमांशेष की दशा में नव सप्तमेश के नवमांशेष की दशा में, सप्तमेश की दशा में, नवमेश की दशा में, द्वितीयेश की दशा में आपको पार्टनर मिलता है. चंद्र की, वीनस की, राहु की दशा में आपको पार्टनर मिलता है. सब पे No, मिलने so वाले हैं। हाँ, तो 4-5 these तो are the बता दी see now तुमने। it is like now you have a tool, you have colors, all the colors I have given you. अब इस वाली पेंटिंग में, इस चार्ट में हाँ, तो अलग-अलग रंग के इसमें कौन-सा पार्टनर वाला हो। कलर यूज़ करना है दैट्स द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजर कि इसके में कौन-सा देखना है. So I met my this husband in Rahu Ketu. Like the first time when I spoke हुँ, to him, I was running under Rahu Ketu, and I met him in Rahu Venus. Exactly when Rahu Venus started, राहु केतु में you were within the span speaking. of 1 week. I started talking to him in Rahu Ketu. Yes, and हुँ. Rahu Ketu is on my 1/7 axis of day 9. So Rahu in 1, Ketu in 7. We have a discussion on that. Huh. So I am actually I've noted down a lot of this. I asked all more like maximum people to give me the details ki when they met their partner. Yes, we did a research on that. They I put a yes. story if I talked about we put a story and I did a research on that. We got 120 responses and we made 120 Mm, charts and their dates mm, and when did they meet and what was and we used that data in our masterclass. So we did a masterclass on seventh house and we used that data and discussed okay, okay this is the thing. Similarly for D10 as well, D10 sorry career as well and using D9 for career and we had a data of almost like 50, 70 people and their careers. And mhm, we again mhm. made charts So and how used you that take data, data for research? put it on story. And, wow, make a Google form and put it on story. lovely. है ना? That's it. अभी तक Like I मैंने तुम्हारा डेटा नहीं भरा। भरना whatever चाहिए था। whatever question I have, I put it and then I like make a very detailed form. Okay, just fill this, when did you meet, what was the date, time of your partner meeting and all of that. हाँ, First meeting and how do you describe your relationship, good, bad, okay, fine, they're cold, they're because all I would try to put at least all 9 planets. Okay, they're talkative, हुँ, they're cold, they're creative, they're angry and हुँ, all that. हुँ, So हुँ, whatever they हुँ, feel, so I know कि अरे ये वाला planet का थोड़ा impact ज़्यादा है, इसका नहीं है. So I try to हुँ, do हुँ, that, हुँ, हुँ, make a हुँ, हुँ, form accordingly हुँ, and then वो fill करते हैं and then I get data from that. हुँ, ओके। और Mhm, ये जो हमारा करियर का पीक आता है, सो mhm, डाउनफॉल और पीक इन फ्रॉम mhm. व्हिच हाउस यू सी? एनी Not from स्पेसिफिक house. हाउस और No, एनी फ्रॉम from लाइक Dasha दिस and Gochar. दशा एंड गोचर? ओके। Now, let's say you are हुँ, going through a nice career, right? Great career, हुँ, and अब सैटर्न का ट्रांजिट होता है एंड आपका अष्टक वर्ग में वो 1 पॉइंट पे चला जाता है, राइट? एंड हुँ, सिमिलरली जुपिटर का ट्रांजिट जैसे अभी रिसेंटली आई हैड अ क्लाइंट 2 दिन पहले एंड उनका आई एम नो के नेक्स्ट ईयर में सैटर्न 1 पॉइंट पे जा रहा है एंड जुपिटर 7 से ड्रॉप होके 2 पे आ रहा है,
सैटर्न 5 मतलब से सैटर्न एक्वेरियस में 5 पॉइंट पे है अष्टक वर्ग में, पाइसेस में ओके। 1 पॉइंट पे चला जाएगा, 5 से हाँ, 1। ठीक है। हाँ। जुपिटर टॉरस में 7 पर था एंड वहाँ से वो 2 पर हुँ, चला जाएगा। तो ये तो आ गया, डाउनफॉल आ गया आ ना? गया एग्ज़ैक्टली। सो दिस इज़ एंड उसके बाद दशा आ रही थी नेगेटिव लाइक सो आई वाज़ लाइक हुँ, ओके नाउ यू नो कि नाउ यू एंड आई वार्न्ड हिम कि नाउ इज़ द टाइम टू वर्क हार्ड बिकॉज़ उसके बाद एकदम से पीक दोबारा आ रहा है। हुँ, हुँ। हाँ, सो मतलब वो यू नो रिकवर कर जाएगा वहाँ वो से, रिकवर कर पिक जाओगे कर लेगा। एग्ज़ैक्टली। येस, सो यू नो दैट्स व्हाई गोचर एंड दशा आर मोर इम्पोर्टेंट। हुँ, हुँ, हुँ। क्या अर्लियर टाइम कृत्तिका वाज़ यूज्ड एज़ फर्स्ट नक्षत्र। हाँ? In earlier time, हुँ। Kritika Nakshatra was used as first Nakshatra. Yeah, so nakshatras have shifted. Yes, that is true. Nakshatras have shifted अब। भैया आपको सब जुपिटर से रिलेट करते हैं, थोड़ा जुपिटर बताइए, क्या बताएँ? जुपिटर के लिए कुछ बता दो जुपिटर के बारे में। जुपिटर के लिए आई डोंट नो व्हाट टू टेल जुपिटर का कलर ये रेमेडीज़ तो नहीं बताएगा, वो देते ही नहीं है रेमेडीज़ तो माँगो मत उससे। जुपिटर के लिए यू नो फॉर अ प्लैनेट एनीथिंग दैट यू नीड टू नो देयर phlegmatic that is one thing big yellow color not for him not to give not to wear that is what you imagine him as you imagine him as big with beard with big belly so हुँ, and intelligent slow moving relaxed not very worried and very public, हुँ। very out there, uh, deals with. दिस इज़ व्हाट यू So इमेजिन। that is what you have to imagine, not do any of that. कहीं तुम सोचो अरे जुपिटर हाँ। बड़े हैं तो let me eat and get myself fat. You don't have to do that, right? So it's because people are जुपिटर like आ अरे रही है, मैं जुपिटर का येलो हॉस्पिटल जा कलर रही है तो मैं येलो पहन लेता हूँ. People do that, right? जुपिटर का येलो कलर हूँ। तो मैं येलो पहन लेता हूँ, right? जुपिटर तो फ्लेगमेटिक भी है तो अपनी एलर्जीज भी करवा लो. ऐसा तो नहीं करते ना लोग. So people choose very convenient things कि येलो कलर तो येलो पहन लेता हूँ. जुपिटर हैज़ व्हाइट बियर्ड बट नहीं तुम्हें तो हाँ, बियर्ड नहीं रखना है. दाढ़ी तो नहीं सफ़ेद कर पाओगे ना तुम Yes, अपनी। exactly. So people are like कि अच्छा ये तो कर लेता हूँ. So that's why you don't have to do it. You just have to imagine it. If you're worshiping him, imagine him. Oh, there's one thing I was working on, हाँ, which I did not notice earlier, and it is totally हाँ। out of topic, right? Totally out of topic for you. I went to this temple. I was in Hyderabad, right? So I went to this temple. I think Jagannath temple they have there, and in that there was Navgraha नब area छोटा था नवग्रह के लिए, हाँ, हाँ, right? Where हाँ। and that was for the first time when I saw नवग्रह. Usually in north when I see यहाँ पर हमारे घर के आसपास नवग्रह they put a circle and चार 9 के 9 ग्रह उसके अराउंड बनाते हैं वो. चारों इन तरफ करेक्ट हाँ, चारों तरफ यहाँ बनाते हैं. पे भी है, रमण रीति में भी है एक हाँ। So when I saw that they had नवग्रह in a square form, right? ओके। उसकी वेदी पर and in a square form and they had put हर एक ग्रह का face in different direction. And I हुँ, was like, okay, that is something different. Okay, you know, sun is facing this side, moon is facing this हुँ, side, Ketu is facing this side. And I'm like, हर एक planet अलग अलग डायरेक्शन में different. And I'm like, okay, now I need to figure out कि कौन से planet because you know कौन से planet कहाँ पर बैठा हुआ है. But why are they हुँ, facing in different directions? They should all either face east, right? Or either face हुँ, west, हुँ, either face in one direction. But सबके अलग अलग direction. And then I found it. काफी research करने के बाद I found it, and I was like, okay, I was planning on putting it on my channel. So I'll share it with you as well. Okay, I found this direction कि कौन सा planet कहाँ पे दिखता है. If you are making a Vedi of that, क्या मिला फिर? कुछ I मिला? found it. I have an image. How do I share it? Can I share an image here? व्हाट्सएप भेज दो ना, But कैसे how will करोगे you शेयर? show it व्हाट्सएप to पे। people? अरे ऐसे कैमरा बैक करके मैं लैपटॉप में तो खोल ही रखा है व्हाट्सएप, इतना ईज़ी है। Wait, wait. I'll have to get up. No, no. I have this message WhatsApp. I do I have your number on WhatsApp? I have it हाँ, मैंने तुम्हें Insta. मैसेज भेजा है, So मैं this दोबारा thing चेक might कर come लेती handy for people if they are worshipping Navgrah. लो अब तो मैं परेशान करती रहूँगी, चलो लाइव पे चल रहे हैं। Uh, तुम अपनी किताब मत खोलना। so people can write it down. People can take a screenshot. People can do whatever. So that's a thing they should हाँ, do. I'm gonna put it out. Wait. Uh, दिव्य तुम उसमें भी हो ना उस एक ग्रुप और है, कौन-सा है वो उसका आई आई हैव सीन यू देयर उसमें द Astro webinars. सेलिब्रेट एस्ट्रोलॉजी सम सेलिब्रेट ऐसे करके था। सेलिब्रेट एस्ट्रोलॉजी वैदिक ज्योतिष में भी हो ना तुम? I don't know. I have just two यस। groups of astrology that I am हाँ, on. बताओ कौन-कौन से? ये मैंने देखा है तुम्हें किसी एक और ग्रुप में देखा है।
एक और है, दिस वन ऑफ माय This फ्रेंड one, ही इज रनिंग, this one. व्हाट इज द नेम? ओके, ये कौन सा है? So sun, it ओह, will be in center that we know, but it will face east. So if अगर तुम sun की मूर्ति बनाते हो, right, अरे and कोई you keep, स्क्रीनशॉट लेके डाल देना ग्रुप में। yes, तो अगर तुम sun की मूर्ति बनाते हो, तो sun will be हुँ, facing that, but Saturn की मूर्ति के सामने ही होगी, but it will be facing this direction. The sun and Saturn will have back towards each other, ओके, right? And Jupiter हुँ, and Mars will have their backs toward each other. So you'll see Jupiter हुँ, here and हुँ, Mars here. तो उनकी back होगी एक दूसरे की तरफ. So this is something हुँ, that I saw it for the first time in Hyderabad. हुँ, And I was like, okay, I just knew कि ये positions हैं planetary sun यहाँ है, moon यहाँ है, Mercury यहाँ है, Venus है. But I हुँ। always used to think that they all face in the same direction. So नहीं, नहीं see, यार, मस्त है ये तो। new learning for me. So you guys should येस, also learn this. I ले found लिया it. स्क्रीनशॉट, ले लिया ले मैंने। लिया? Okay. अ, क्या है? इट्स कॉमन इन साउथ इंडिया। Yes, 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 yes. अच्छा। And that's why finding it became a little difficult for me as well कि कहाँ मिलेगी ये मेरे को. So I found it on हुँ, Quora. I was looking for PDFs and I was on my, script par and Internet Archive, but I found it on Quora, हुँ। which should have been my first go, but like हाँ, last में पहुंचा मैं वहां पे. सो I ये है, गॉट think द स्क्रीनशॉट, डाल देना। तुम उसके ग्रुप में हो यार। व्हाट इज़ दिस यू हैव मेंशन्ड द नेम, टेल Konark, मी द नेम ऑफ इट। Konark. कुनार, ही Yes, इज़ अ yes, वेरी ओल्ड yes, फ्रेंड ऑफ माइन। yes. I am in his कुनार्क group. ग्रुप में, Yes, 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 yes. वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन। जब वो एस्ट्रोलॉजी का कुछ नहीं जानता था, तब से Yeah, जानते हैं। that is yeah, yeah. That is a बट good अगेन group. वहाँ पे भी हाँ, इट्स अ गुड ग्रुप, वेरी नॉलेजेबल पीपल देयर Yes. But I don't एंड दे get लाइक time to बहुत contribute in. रीजनिंग वाला क्वेश्चंस करते हैं। अब तो खैर That I इतने like. गेट टुगेदर नहीं होते हैं। Hmm. पहले लाइक दे यूज्ड टू I हैव went दिस to their ग्रुप। meetup as well. Did you come to Delhi meetup? No, no, no. नहीं, You weren't. If you would have, I would have recognized. नहीं, Nah, I don't. मुझे मुझे बुलाया था, बट आई गेस Yes. ये अभी लास्ट ईयर भी हुआ था ना? लास्ट ईयर की बात कर रहे हो राइट? Hmm. आई वाज़ नॉट देयर। मेरे लिए उन्होंने लंच वंच सब रखवा लिया। Yeah. आ रही Yeah. हूँ, नहीं आ रही। Yeah, exactly. The अदरवाइज़ last year that would have we would have met there then. हाँ, नहीं हमें ऐसे मिलना था ना। But ठीक है, people are सॉरी talking. भाई, दीपा के सवाल का जवाब दे दो, ये परेशान है। बहुत What? बार पूछ चुकी है। What? तुमने वो क्या है, सॉरी टू डिस्टर्ब विद द सेम क्वेश्चन अगेन। केतु इन कैप्रिकॉर्न इन द 7th हाउस गिव्स लाइफ लॉन्ग Ket डिस्टेंस रिलेशनशिप Ketu और in Capricorn एनी in वन ऑफ द seventh. स्पेसिफिक टाइम। Ketu in Capricorn in seventh. Where is Saturn? Seventh Lord is important first. हुँ। अच्छा यार, ये जो जो मैरिज से जैसे देयर आर लेट्स से लाइक देयर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस वेयर वी कैन सी मैरिज खराब होने वाली है। वीनस भी Hmm. खराब हो जाए, 7th लॉर्ड भी खराब हो जाए Venus खराब हो जाए, और सेवेंथ लॉर्ड 7th लॉर्ड खराब हो जाए, का सन डिस्पोज़िटर सैटर्न भी खराब हो जाए। या सन सेवेंथ आ जाए सामने. तो ये 3-4 जगह से यस. और ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट आ जाए। ना हो. जुपिटर का एस्पेक्ट ना हो. हो, नो, वो हो तो पॉजिटिव हो हो, जाएगा. दैट विल बिकम गुड, राइट? जुपिटर का एस्पेक्ट अगर हो सेवेंथ. एंड जुपिटर इन लेट्स लेट्स से जुपिटर इज़ इन इट्स मर्ण कर्ण स्थान, 3rd हाउस में, एरीज़ असेंडेंट है, नो, ठीक है? स्टिल तो कम हो गए. जुपिटर की पावर कम हो गई, हम्म. बट जुपिटर इज़ लुकिंग एट 7th हाउस इट या यहाँ पे रेट्रो जुपिटर 7th को देख रहा है। रेट्रो हो गया तो स्ट्रांग हो गया. एंड जुपिटर यहाँ पे 9th और 12th का लॉर्ड हो गया. इट विल बी गुड. तो यहाँ पे एस्पेक्ट इट हर विल बी कंडीशन के सेविंग. अंदर जुपिटर का अच्छा होगा, Usually इन ऑल द 90% कंडीशन। of the time, 90% of the times it is good. Okay. And what are those 10% exception when it is not going to When benefit? Jupiter itself is a problematic planet, when it is the lord of negative houses. Let's say if it is जब it is Badakesh, केंद्रेश या तो बालकेश और मार्केश एक साथ बनता है जुपिटर, हाँ, राइट? सो तब प्रॉब्लम मे बी होता इन है। दैट टाइम. वीनस वाले कहाँ जाएँ बताओ? जुपिटर, वीनस इतने अच्छे प्लैनेट है, दोनों ही खराब हो गए। But yeah, see, use it ना, use it in positive way. मेरे तो दोनों ही 12th में जाके बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा That's a इन्हें positive पॉजिटिव भी, place. It's a नेगेटिव भी। positive. You spend money and you'll get more money. हाँ, ठीक है। Or someone is asking, आज किसको पकड़ लाए? That's such a nice question.
कौन कौन पूछ रहा है आज Anil उसको ji, पता नहीं है। Anil ji is like नहीं that, तो that's what अब I say. now That is what I you like. know That is what I love. When people don't know and they're like, who the fuck is? ओह माय गॉड! ये कहाँ से आया है? ये That is कहाँ-कहाँ से अतरंगी लोगों को पकड़-पकड़ के लाती है। that is the best. Sandeep. What? पीएस कौन से ग्रुप में? अरे कृष्ण में डाल दो यार, अभी तो वही है एक्टिव। इतने 36 जुपिटर वीनस क्या ही कहलाते हैं भगवान ही जाने। वैसे जुपिटर वीनस का जो कंजंक्शन है मैंने बहुत अच्छा नहीं मैंने पढ़ा। देखा भी नहीं अच्छा. But but that is true. But it is good if you are trying to teach people. Both are teachers, right? हाँ, नहीं तभी के लिए ठीक है। कहीं एक जगह पे अच्छा होता है दैट इज़ 12th थोड़ा बहुत जो 12 see पढ़ा है Jupiter मैंने। individually is great, Venus individually in great, दोनों की राशि जिसमें है वो पॉजिटिव राशि हो जाए, then it is great, राइट? लॉर्डशिप उनकी अच्छी हो जाए, then it is great. अगर वो नवमांश में पॉजिटिव नवमांश में हो गए जुपिटर वीनस दोनों अपने अच्छे-अच्छे नवमांश में, हाँ, then it is great, हाँ, राइट? तो देयर आर हाँ। मल्टीपल चांसेस जब वो अच्छे हो सकते हैं या फिर D60 में अगर अच्छे हो गए, then it is great. बट D60 तक तो आयुष कैलकुलेशन नहीं पहुँच मोनिका पाती है। हुँ। आयुष once said, "Talk to Umang Taneja and you will be like whatever you know was lie and he will revive whole astrology for you." Umang Taneja is the guy, is an astrologer, right? Who wrote Yes. yes, I have read his book. Who roast, not they wrote, who roast. Astrologers. गलत बोला तुमने। So I no, He roast. I have read his book. I have read his book. I have read his book on Shadi, on partnership, where he used fifth house for love. And I did the same technique with his book as well, where I cancelled out all the हुँ, Navmansh charts and I solved those charts. And I have like notes of that in, I think, in my this as well. I'll show you what I did in his book. I don't know. Umang yes, he Taneja. called father for Nadi astrology. I think it is if it is the same person. Wait a second. Predicting marriage. There was one Trivedi. There was G Umang जी Taneja. मेरे Umang दोस्त। Taneja. Yes, yes, yes. This is the book. I get हुँ, it. I get it. I get it. By Umang Taneja. Yes, I have read his book. Death and he wrote a book on marriage, marriage and relationships, and I have made हुँ, some extensive notes on that. All the there were. Wait, I'll show you. Uh, there. Hmm. This is what it is now. So there was this chapter I can share, right? It's fine. So हुँ, it हुँ, it is his book, Marriage and Relationship by Umang हुँ, Taneja, and I हुँ, read this book, and I actually was like looking for love, marriage, and all. So I did the same practice I was telling you. So this is what I was doing. So I actually in all of हुँ। this charts, I रंग बनाते हो। apna like I made my own notes ke are they working or not. I did my own calculations and trying to figure out हाँ, कि कहाँ पर क्या है, हाँ, हाँ, rather than हाँ। using his explanation to do my हुँ, research. So the हुँ, best part is you get the time, detail, and place of birth and everything, and you can create, get some details on that. ये हाँ, क्या चल रहा है, because you have a हुँ, chart which is with an astrologer. So yeah, I don't know what he do now. हुँ। Roast, I don't know, but yeah, I have done. I read his book that I remember. Used it for my research once. तो कैसी लगी? On love marriage, अब one कैसी लगी? one problem was he used fifth house for love marriage, which I did not agree with. हुँ, Uh, because हुँ। fifth house is not for love. So, What okay. uh, It is for fi- progeny, fifth progeny, education, intelligence. education, intelligence, speech is very strong in fifth. It is for your interest and liking as Interest well. and liking, yes, as well, but not love. There's a difference between love. Love is directly seen from seventh house. You don't have to go to Love or fifth. lust. Oh, both. Anything related to marriage, relationship, person, love, any emotion towards a Mhm. person comes from seventh only. And it is very हाँ, well documented in all of these Shastra as well. You don't have to look for beyond that. I don't know where हुँ। it came from. Fifth house का impact कहाँ से है? Fifth house का Fifth तो house act okay, so what I think वही वही वाली चीज़ है ना कि बना लिया खुद से। Fifth hmm, house is to be seen about your interest area, how you like, hmm, your liking, hmm. right? Anything which you like in someone is to be seen from fifth house. But not someone, But if you na. fall in love, Liking.
Likings Liking, is liking. because liking in Like someone would for be. example, let me just quote an example here. Like if I have Saturn in fifth house, Hmm. I'll probably fall in love with somebody who is be more responsible. Because your Saturn is aspecting seventh here. Seventh house, हाँ, वो भी obviously. But not because Saturn is in fifth. Okay. So that is what नहीं I was यार, saying. I've seen many charts here. Whatever planet sits in seventh house, or sorry, in fifth house, Hmm. and uh, that type of nature you get attracted towards. But that's what my research was. That's what I was saying. कि Umang Taneja ki book I use or other books as well. Just I just try to do this thing without fifth house. Is it working हाँ or हाँ not? हाँ. And it did. So the thing is, why I'm saying this, why I'm being so strong about it, is directly in one of the book, Shadi ke Vivid Ayam. What was the name of that book? Who was the author? ये रहा. वैवाहिक विलंब के विविध आयाम mantra by Mridula Trivedi. So Mridula Trivedi wrote this book. Very कंपेंडियम ऑफ मैरिज भी उन्हीं की है ना? वही है क्या हिंदी? Mridula Trivedi Hindi, yes. And this is a very कंपेंडियम ऑफ good. मैरिज है. आई हाँ. हैव इसके दो वर्जन है, 1 and 2. No, this one is So single. this It is a is, different book. Yeah, yes. this is a different book. The name is good. Vaivahik Vilamb ke Vivid Ayam, right? So you Mm-hmm. read that book, and in this she talks about what marriage is, right? And all of Mm, them being seventh seen from seventh. mm, So that is where it starts from. Okay, okay. Fifth house का involvement कम हो रहा है, and then you go back and read all the shastra as well, and you find the similar things. कि mm, seventh का impact constantly, उपपद का impact. Then you start seeing the उपपद का mm, and धारा कारक का impact. mm. So that is why it comes in. But I think ऊपर पता we का have impact, हाँ, gone उससे तो होता 140 minutes. People will stop, like है। नहीं, वो block तो us or रहते हैं, something. ये लोग नहीं सोते हैं, ये लोग सोते नहीं हैं। No, no, we are taking them for जब granted. तक We should not do that. मैं नहीं, नहीं, मैं जब तक जगती हूँ तब तक तो नहीं सोते हैं। जब तक इनकी आँखें एकदम बोझिल ना हो जाए ना, इनके मुँह पे ना Hmm. गिर जाए फ़ोन, तब तक तो ये लोग जगते हैं। Okay, अच्छा, I एंड think we've. व्हाट इज़ लाइक हाउ यू सी भाव चलित? This is a question that everyone asks. You don't see Bhav Chalit, you just know Bhav Chalit. That is the thing. हुँ, You know हुँ। it. You know it. Okay, wait. I'll tell you. But give me 2 minutes. I need to use the washroom before I get into it. And I think that is not something I should say publicly. अब तो बोल दिया, अब जाओ। I will show you an example if you allow me. Tab tak you can talk हाँ, to people. I'll be back in 1 minute हाँ। only. Right? ओके, Sorry, ओके, guys. प्लीज़ टेक योर 2 मिनट्स, नॉट इवन 1, आराम से। Okay. गवर्नर यार, शी हिप्नोटाइजर्स, हाँ, तुम्हारी आत्मा मेरे कब्ज़े में है। Okay. Chalo. BRB. इट इज़ नेचुरल ह्यूमन थिंग, यस। टाइम आउट, अब तो जाओ, जाओ पानी पी लो। क्या है, अब तो बोल दिया है कोई नहीं, हाँ, ठीक है। भैया माय गर्लफ्रेंड इज़ एस्ट्रोलॉजी, सॉरी फॉर ऑफेंडिंग लैंग्वेज। योर गर्लफ्रेंड इज़ एस्ट्रोलॉजी। ओके। तंत्र का ड्यू उपयोग मत करो मैम। अरे नहीं यार, मुझे तंत्र का टी भी नहीं आता। आई एम नो वन, आई डोंट नो एनीथिंग। यहाँ मुझे तुमने अच्छे से कंफर्टेबल कर दिया है। खाना, सोना, पीना, बैठना, पानी, हाँ, मैं तो ये तो लोटा लेके बैठी हूँ भाई। योर व्यूज़ एंड भाव चलित, तब तक आज मैं व्यूज़ नहीं, आज तो मैं व्यूज़ ले रही हूँ। मैडम आप क्लास लेते हो और मैं देती भी हूँ। दोनों काम कर लेती हूँ मैं। अरे हाँ, ये वो आज आज हम लोग वो खाना-वाना खा के बैठे हुए हैं सब लोग आराम से। For them like it is like a टीवी शो is going on. How to calculate lifespan of a person? बहुत अच्छा सवाल है। पूछेंगे, आने दो, 2 मिनट होने के बाद में। इनकमिंग मोड में हो आप आज। हाँ, और क्या? श्रवण श्रवण भी करना चाहिए। Hello. हाँ, हाँ। Hi. आगे तुम, Yes, and क्विक। I was I was also thinking that I should not take so much of your time. We'll discuss this as the last thing because it will just because I'm thinking Bhachalit is अच्छा। something that a lot of people ask. And हुँ, हुँ, wait, I'll give you a quick understanding
And Hmm. that I think will make you be like, okay, do you even want to, use or not use, or use the word use with Bhav Chalit? Huh. Uh-huh. Right. Wait, let me see if my pen is working. Yes. Sir, what time you sleep, Devashit? Whenever sleep hits. It's That is okay. true. That is true answer. That नहीं, whenever it अच्छा है hits. जवाब। जवाब बहुत अच्छा है। तुम्हारी नींद कितने बजे हिट करती है एवरेज टाइमिंग्स में? There is no मैं such. 2-3 बजे तक बैठी रहती हूँ यहाँ पे, पता है? Oh, okay. Then that's the case. हाँ, 2 दिन तक I can also set, but I prefer not to usually. Okay. कोई नहीं, Uh, आज फर्स्ट टाइम है, तुमको थोड़ा कंफर्टेबल होने की ज़रूरत है, नेक्स्ट टाइम से आएँगे। let me find my Navamsa stack. I actually have a stack on Navamsa that I made, which I can't find right now. Just a second, na. Mm, I put a lot of effort into making that. I cannot lose it. Just a कोई नहीं, second. खोजो, खोजो। Mm, बस पीछे से खर्राटों की आवाज़ आए तो वो इग्नोर कर देना मेरी। okay. Uh, Prajita is late today. I think this one we'll use. Yes. Uh, okay, you'll have to. Okay, I'll show you my page, and I think it is going to be a little bit of a thing. Okay. हुँ, So you guys have to be a little हम कर लेंगे okay. मैनेज, तुम इतना स्ट्रेस मत लो। ठीक है? Okay, चलो. हाँ, Should I change my screen? हाँ, करो, बात करो। Now I hope you अरे can वाह! see. दिख रहा है। ठीक यस, है? यस, गोल चक्कर बन गया है सुदर्शन टाइप। So this is what, and if it's not clear, tell me. ठीक है? This is what your whole chart is technically. हुँ, That square thing, that is not your chart. Okay, we'll use a हुँ, little blue or pink color so that दिख जाए सबको. Just a second. ठीक है, जो भी है. So this is your chart. ठीक है? So what हुँ, what we see, let's say we are seeing this as, this is the lagna or this is Aries. ठीक है? हुँ, Uh, this is Aries, and हुँ, these are Navmanshas of Aries. ठीक है, ठीक है? 9 This 9 is पार्ट्स, ओके, Taurus. 9 These are डिविजन्स। Navmansh of Taurus. ठीक है? So let's हुँ, say you see your planet when you are born. Your lagna is here हुँ, somewhere. ठीक है? हुँ, This becomes your lagna. ठीक है? And you ठीक were है। born at time when moon was here, sun was here, Mercury was here, Venus was here, Jupiter was here, Saturn was here, something like हुँ, that. ठीक है? हुँ, Now, this is your chart. So when you look into your chart, that square chart, if you look into this one, right? What you're gonna see first, जो हुँ, लग्न हुँ, एरीज में है, लग्न एरीज में है, you're gonna see हुँ, first house as Aries, right? And हुँ, you're gonna see first, and let's say यहाँ पे राहु है, ठीक है? You're gonna see हुँ, first, wait, यहाँ पे राहु बना देते हैं, राइट? You're gonna see फर्स्ट हाउस में एरीज है, एंड यहाँ पे राहु है, तो फर्स्ट में राहु हो गया, सेकंड में मून हो गया, थर्ड में हुँ, वीनस हो गया, फोर्थ में सन मर्करी हो गया, राइट? दिस इज व्हाट वी ड्रॉ हुँ, ऑन पेपर बिकॉज वी करेक्ट। कंसिडर हाउस एज राशि. सो लग्न जहाँ पे पड़ गया, हुँ, दिस होल हाउस we will consider, this whole rashi or house will just overlap. But हुँ, what happens in Bhav Chalit, so what happens when you are considering Bhav Chalit, that इसको हम center मानते हैं. This is what we consider हुँ, center. ठीक है? अब इससे 15 डिग्रीज आगे और इससे 15 डिग्रीज पीछे हम उसको हुँ, वन फर्स्ट हाउस मानेंगे. हुँ, रादर देन करेक्ट। कंसिडरिंग दिस, हम इसके हुँ, आगे पीछे वाले को 15 डिग्री मानते हैं. ठीक है? तो ना हमारा हाँ, हाउस चेंज हो गया. प्लैनेट वही है, राहु वही है, लग्न वही है, मून वही है, सब कुछ वही है. बट हाँ, हमारी कैलकुलेशन, हमने मान लिया कि ये है. पहले हमने मान लिया था ये है, अब हमने मान हाँ, लिया कि ये फर्स्ट हाउस है. चेंज कुछ नहीं हाँ, हुआ, प्लैनेट अभी भी वहीं की वहीं है. पहले हमने हुँ, माना था ये है, अब ये. सो नाउ पहले राहु फर्स्ट में था, अब सडनली राहु 12th में पहुँच गया. हुँ, हाँ, मतलब जहाँ से हमारी लगने की डिग्री राइज़ है, हमने वहाँ से येस, कैलकुलेट करना शुरू कर राइट. दिया। तो व्हाट हैपेंड, राहु जस्ट 12th में पहुँच गया. हुँ, बट है तो वहीं पर ही ना, है तो अभी भी इसी हुँ, एरिया में.
हुँ, राइट? है तो करेक्ट, अभी भी करेक्ट। एरीज में और एरीज नवमांश में ही। हाँ, करेक्ट। एरीज राशि और एरीज नवमांश में ही है ना अभी भी। बट नाउ हाँ, व्हाट वी आर हाँ। डूइंग, वी आर कंसीडरिंग इट हुँ, एज इन द 12th हाउस. हाँ, ठीक। So this is the only thing that Bhav डिफरेंस। Chalit does. Yes. So if you are into astrology, like if a person is into astrology, he will not worry about कहाँ पर है. He'll just see कि लग्न कहाँ है, उससे कितना दूर है, मून कितना दूर है, वीनस कितना दूर. So you'll, अगर हुँ, ये दोनों साथ में आ गए मान लो, या फिर ये हुँ, दोनों साथ में आ गए, तो सन मरकरी भी साथ में हो सकते हैं, या फिर सन वीनस भी हुँ, साथ में आ सकते हैं किसी के चार्ट में. हाँ, करेक्ट, हाँ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सन वीनस और मरकरी तीनों पास पास ही हैं. हुँ, हुँ, ठीक है, अल्टीमेटली उनकी लोकेशन ये है, वो इस हुँ, राशि और इस नवमांश में है. ठीक हुँ, है. नाउ समटाइम्स दिस इज वन मेथड, राइट? एंड लेट्स डिलीट दिस होल. दिस इज वन मेथड. अनदर मेथड इज, तो बेसिकली वी हुँ, कंसीडर टू मेथड, राइट? कि एक तो हाउस एंड भाव सेम हो गया, एक में करेक्ट। हमने लग्न माना हुँ, एंड उसके हुँ, 15 डिग्रीज करके हमने आगे-पीछे कर लिया हमने, कैलकुलेट कर वो लिया, बना लिया, भाव बना लिया एक। भाव बना लिया अपनी तरफ से, बिकॉज वी आर हुँ, ओवर स्मार्ट. ठीक है. हुँ, सो वी डिड दैट. नाउ देयर इज थर्ड मेथड, जिसमें क्या होगा हुँ, कि हम देखेंगे लग्न कहाँ है. ठीक है, हुँ, हमने ये लग्न कंसिडर कर लिया, मान लो ये लग्न है. ठीक है. एंड हम कंसिडर करेंगे सप्तमे, सप्तम इसके ऑपोजिट होगा. ठीक है. हाँ, तो करेक्ट। थर्ड यहाँ पे आएगा. ठीक है, सप्तम इसके ऑपोजिट हो गया. हाँ, अब हम क्या करने वाले हैं, बिकॉज वी आर सो ओवर स्मार्ट, we'll हुँ, not consider this and this as the start and end. What we are going to do is we'll see कि अच्छा गर्मियां हैं तो सन ऊपर कब हुँ, पहुंचेगा, और सर्दियां हैं तो सन ऊपर कब पहुंचेगा. तो 10th हाउस को हमने हुँ, डिफाइन कर लिया कि जब सन रीचेस नून, लाइक सन रीचेस ओवरहेड, दैट इज हाँ, व्हाट 10th हाउस इज. करेक्ट। ठीक है. नाउ हुँ, विल कंसिडर दिस एज 10th हाउस, लेट्स से. अब हुँ, गर्मियां हैं तो यहाँ पे सन स्लो होगा, हुँ, राइट? इट विल मूव स्लो. हुँ, तो हुँ, 10th हाउस के अराउंड हम अब, सो वी फिगर्ड आउट 10th हाउस यहाँ पर है एंड लग्न यहाँ हुँ, पर है. तो हुँ, इन, इट्स अ इक्विटोरियल पोजीशन. इन हुँ, समर्स सनराइज थोड़ा पहले होता है एंड हुँ, सनसेट थोड़ा करेक्ट। बाद में होता है, हुँ, राइट? तो हमारा डे टाइम जो है वो इंक्रीज हो गया एंड हमारा हुँ, नाइट टाइम जो है वो डिक्रीज हो गया, डिक्रीज़ हो गया, यस। राइट? तो व्हाट इट इज डूइंग इज, यहाँ वाले जितने भी हाउसेस हैं, ये वाले हाउस हुँ, ये थोड़े थोड़े एक्सपैंड हुँ, हो गए. तो 10th हाउस हुँ, थोड़ा बड़ा हो गया एंड सिमिलरली सारे हाउसेस थोड़े थोड़े एक्सपैंड हो जाएंगे, हुँ, राइट? एंड ये वाले सारे हाउसेस थोड़े थोड़े श्रिंक हो जाएंगे, राइट? नाइट की वजह से. तो वी श्रिंक हैव हो श्रिंक राइट, दोस हाउस करेक्ट, एंड वी हैव विंटर। एक्सपैंडेड दोस हाँ, हाउसेस. सो नाउ व्हाट माइट हैपन कि एक हाउस में 3 राशियां भी आ सकती हैं, 2 भी आ सकती हैं और 1 भी आ सकती है, हुँ, राइट? सो नाउ 10th हाउस की डिग्री ज्यादा है. हुँ, तो लेट्स से यहाँ पर तुम्हारा पहले सन था, यहाँ मून था एंड हुँ, यहाँ पे जुपिटर था. हुँ, अब वो तीनों एक हाउस में आ गए जो पहले 2 डिफरेंट हाउसेस में थे, हुँ। राइट? सो दिस इज अगेन अनदर मेथड ऑफ कैलकुलेशन कि हमने अपने हाउसेस को डिपेंडिंग, अब विंटर्स में क्या होगा, ये हमने छोटा हो जाएगा. राशिज़ जो है बेसिकली जो लेंथ लेंथ ऑफ द भाव हाँ, लेंथ ऑफ द डिपेंडिंग भाव ऑन द हमने अपने हिसाब से कर लिया सीज़न। डिसाइड. हुँ, लेंथ हुँ, ऑफ भाव वी कैन डिसाइड ऑन आवरसेल्व्स कि विल कंसीडर 10th हाउस, सन जब नून पे पहुंचता है, राइट? हुँ, Based on that we are going to consider 10th house, we are going to consider lagnesh or मतलब the rising and setting as हुँ, that, or we are going to हुँ, consider सब कुछ equal होना चाहिए. We are हुँ, going to हुँ, consider या तो राशि is equal to भाव. So there are these three हुँ, methods of calculating. But हुँ। out of all of this, nothing is going to change where your actual planets are, हाँ, वो तो वही है, स्टैच्यू है, right? करेक्ट। So firstly a person has to understand कि planet अपनी राशि नहीं बदलेगा, राइट? अगर ये लेट्स से केतु यहाँ पर है एरीज़ में, इसमें, तो वो हुँ, राशि नहीं बदलेगा, वो यहीं रहेगा. अगर मंगल सेकंड राशि में और सेकंड ही नवमांश में है, यानी टॉरस के नवमांश में, तो वहीं रहेगा. गुरु यहाँ है और चंद्र के नवमांश में, तो वो यहीं रहेगा. हुँ, 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 वो राशि नहीं बदलेगा, ठीक है? हाँ, अब क्या हो रहा है, हमारी कैलकुलेशन की वजह से भाव चेंज हो रहे हैं. ये फर्स्ट की बजाय हुँ, 12th हो सकता है, ये सेकंड की बजाय थर्ड हो सकता है, ठीक हुँ, है? सो टू जज अ भाव चलित, your हुँ, first instinct has to be, no, Rashi has not changed. Navmansh has not changed. Nothing has changed. Yeah, एवरीथिंग इज़ सेम, करेक्ट। everything is same. Now I am judging it as a second bhav because I've considered Lagna center, whereas earlier हुँ, I was judging it first house. So maximum what you can do, you can come to two conclusions just based on bhav, हुँ, right? ट्रू, So bhav chalit mein only thing you can मेक्स come to सेंस। is a extra additional information कि मेरा bhav I have now calculated different bhav. हुँ,
ठीक है? हाँ, सो वी मतलब माइट बी उसे क्लेवर आप और थोड़ा माइन्यूट डिटेल्स में जा सकते हो इफ यू वांट टू लुक अहेड। एंड दैट टू माइन्यूट इन द कैलकुलेटिव, सेंस, हाँ, कैलकुलेटेड कैलकुलेटिव है। रिफाइनिंग डिटेल्स के अंदर, हाँ। बट उसका जो टेस्ट रहने वाला इवेंट का दैट विल हुँ, बी फ्रॉम द हुँ, प्लेसमेंट वेयरएवर दिस प्लैनेट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाई पीपल व्हेन कम टू भाव चलित एंड दे आर लाइक मेरा इस भाव में शिफ्ट हो रहा है। वो शिफ्ट नहीं हो हुँ, रहा है, वो वहीं पर है, हमने अपना भाव शिफ्ट कर दिया है। तो हम पहले उसको हुँ, भाव मानते थे, हमने कहा कि नहीं ये भाव नहीं है, अब यहाँ से यहाँ तक भाव है। एंड समर्स में विल बी लाइक नो यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक भाव है। चेंज हो गया। हमने अपनी हाँ, भाव की रात लेंथ रात में विंटर्स में हाँ, रात बड़ी हो रही है और हाँ। तो समर्स में दिन बड़ा। अब कोई पैदा होगा मान लो विंटर्स में, सो उसका 4th भाव बहुत बड़ा होगा, थ्रू श्रीपति मेथड 4th भाव बहुत बड़ा होगा, राइट? एंड अगर हाँ, इक्वल भाव है, लाइक नॉर्थ इंडियंस कंसिडर सारे भाव इक्वली, तो वो कहेगा नहीं 4th हाँ, भाव एंड 10th भाव करेक्ट। सेम है। बट कोई कहेगा नहीं 4th भाव बड़ा है, 10th भाव छोटा है। इस हिसाब से जो विंटर्स में पैदा होने वाले लोग हैं, हुँ। उन लोगों के वो चांसेस भाव, हैं कि 4000 ज़्यादा प्लैनेट हो सकते हैं क्योंकि वो भाव की लेंथ बढ़ गई ना, तो देयर आर अ स्लाइट हाँ, चांस कि उनके ज़्यादा प्लैनेट हो सकते हैं वहाँ पे। वो सन अगर पास हाँ। में आ गया तो मरकरी, वीनस क्या पता थोड़ा-सा रख के 4th में घुस जाएँ, हुँ, वो हो हुँ। और वो सकता है। जिस भी टाइम पे पैदा होंगे हाँ, विंटर्स के अंदर, येस। वो वाला भाव उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पड़ जाएगा। So it can be that thing. So that is why, Bhav Chalit should be taken with this understanding कि हुँ, हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, राइट? और वो तब होना चाहिए कि जब आपको लग रहा है कि आपका भाव का रिज़ल्ट नहीं आ रहा है या फिर कंसिडर चलो फर्स्ट हाउस में भाव प्लैनेट है, फर्स्ट में देख लेते हैं बट हुँ, सिंस वी आर शिफ्टिंग लग्न लग्न को सेंटर मान रहे हैं, तो अगर वो शिफ्ट हो रहा है तो विल कंसिडर सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ 12th भाव लेट्स से राहु को हमने 12th में शिफ्ट कर दिया था, तो सम इन्वॉल्व राहु इज़ हुँ, इन लग्न बट माइट गिव सम रिजल्ट्स ऑफ 12th भाव एज़ वेल बिकॉज़ इट इज़ वेरी क्लोज टू दैट, हुँ। खाना राइट? क्या क्वेश्चन है, ये सब तो ठीक है, बट ये बताओ प्रेडिक्शन में क्या यूज़ होगा? प्रेडिक्शन में बट या दैट इज़ ट्रू। तुमने तुमने बताया देखो ये संतरा है, हुँ। ये खट्टा है, ये ऐसे इसकी स्किन ऐसी है, ये वैसा है। भैया अब ये बताओ इसे खाया कैसे जाएगा? तो प्रेडिक्शन में यूज़ करने के लिए मेजरली यू विल रिक्वायर फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन, प्रेडिक्ट क्या कर रहे हो? ठीक है? अगर उसमें भाव की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, लेट्स से यू आर जस्ट लाइक ट्राइंग टू प्रेडिक्ट टाइमिंग तो तुम्हें भाव के हुँ, लॉर्ड की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? तो भाव चलित में लॉर्ड 2 हो जाएँगे अब, पॉसिबिलिटी है। हुँ, 7th भाव का लॉर्ड 1 बिकॉज़ आधी-आधी 2 राशियाँ आ गई, राइट? तो 2 लॉर्ड हो गए जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, हुँ, राइट? सो इफ यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट बेस्ड ऑन भाव, देन यू डू नॉट कंसिडर भाव चलित। हुँ, You come back to one bhav, one राशि rule कि हाँ, one bhav, one राशि, one nation, one election, one bhav, one राशि. You go there, right? When you are trying to be like नहीं मेरे को तो ज़्यादा बोलना है, right? I don't care about mathematics of astrology. I care about saying a lot of things. आपको वीडियोस बनानी है let's say on YouTube. Then you say हुँ। कि it is this, but I'll give you a surprise answer. It will also impact your sleep. And people will be like, what? How? Why? And then you'll be like, that's a secret. बिकॉज़ हाँ, वो भाव चलित में बार टाइम चलेगी। Exactly. So स्लीप को अफ़ेक्ट if करेगा। you are trying to be clever, then but apart from that, it does not impact because astrology को हम basically mathematically use करते हैं to understand timing, to understand good and bad, हुँ, not to हुँ, give personality traits, not to give कि अरे आप तो ऐसे होंगे. That is not astrology, हुँ। right? सही है। मज़ा आ रहा है भाई, बहुत ज़्यादा। मून कभी भाव चलित में फँस सकता है, People फिर used to दैनियल। get people get questions कि भाव चलित को कैसे हैंडल करना है एंड मेरे भाव चलित में शिफ्ट हो रहा है। अरे प्लैनेट शिफ्ट नहीं हो रहा है, तुमने भाव को शिफ्ट कर दिया है। प्लैनेट इज़ सेम, प्लैनेट करेक्ट, द वहीं पर है सेम जहाँ था वो, पोज़ीशन। प्लैनेट का कुछ नहीं हुआ, वो तुमने सिर्फ़ भाव को शिफ्ट कर दिया थोड़ा-सा। So that's why I keep this सपोज़ circle Rashi हाँ, Nam on chart. वो एक्चुअली इट इज़ गुड। मैं लाइक व्हेन आई रीड नक्षत्र एंड व्हेन आई ट्राई टू एक्सप्लेन हुँ, नक्षत्र नवांश हाँ, कि I will किस show you क्योंकि that also. नक्षत्र से नवांशा में कैसे जा रहा है, देन हुँ, आई प्रेफर दिस मेथड I also have a nakshatra similar nakshatra chart क्योंकि वो made ऐसे ही है मेरा। ना पदार्थ में देयर आर ये तो हो गया उसमें बट एक नक्षत्र हाँ, का 4 पदा this है one. एंड देन यस, करेक्ट, करेक्ट। या ऐसे ही है।
ये ज़्यादा बेटर है इन व्हेन यू आर मेकिंग नवांश फ्रॉम नक्षत्र। ले लो स्क्रीनशॉट ले ले, गमोरा ले ले, जल्दी फटाफट ले। कहाँ गए देवीशत, तुम हो या तुम पॉज़ हो गए हो? हाउ टू कैलकुलेट लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्सन? इज़ इट विज़िबल, ऑडिबल और गॉन? हे हेलो, ले लिया? गुड, मुझे पता था, आई न्यू इट। तो हैंग हो गया है, फाइल हैंग हो गया है। ओह गॉन, ही इज़ गॉन। थक गए भई हमसे। ऐस मस्त सेशन। आकाश को थैंक यू बोलना सब लोग जा कर के। हाँ, वो लगा था फ़ोन बैटरी डाइड। जिस हिसाब से हैंग हुआ, तुमने नहीं, तुम्हारी यूनिवर्स ने चाहा। धप्पा। कर लो भाई, एस्ट्रोलॉजर को जाके सब्सक्राइब कर लो जिन लोगों ने नहीं कर रखा है। यही आईडी है इस लड़के की। और इसको कन्विंस करो कि ऐसे हमारी लाइफ में आ जाया करे कभी-कभी। हम तो रोज़ ही आते हैं, तुम भी आ जाओ, क्या दिक्कत है? अपनी नोटबुक्स गुम कर लिया करो कभी-कभी एंड जॉइन हियर। ये हम इसका पिन कर देते हैं। ओके, इट्स ऑलरेडी पिन्ड। बहुत बढ़िया। नो, इट्स इट्स ओके। मैंने पिन कर दिया तुम्हारा, सॉरी। थैंक यू फॉर ज्ञान भैया। इट वाज़ अ ग्रेट सेशन सर, बहुत सुंदर बैनर है आपके यूट्यूब का एस्थेटिक। गमोरा खुश हो गई। ये देखो अष्टम का बुध बुध। ब्रिलियंट सेशन, मज़ा आया। मैं फिर ऐसे अचानक से पकड़ लाऊँगी। इट वाज़ अमेजिंग ब्रो, थैंक यू फॉर योर टाइम। चलो फटाफट से जाकर के अब सब्सक्राइब कर दो आप इस लड़के को। वेयर डू यू लिव इन हैदराबाद? आई एम आल्सो इन हैदराबाद। हाँ, बताओ। ये पहले मेरे से मिलेगा, दिल्ली में मिलेगा पहले मेरे से ये, बाद में तुमसे मिलेगा। ब्रिंग अनुभव एंड दिस गाय टुगेदर। सही है, एक तरफ से पत्थर मारेंगे, दूसरी तरफ से तीर आएगा। ऐसा एक सेशन करेंगे हम लोग। जैसे न्यूज़ में नहीं होता है, 4-5 लोगों को लेके आते हैं, फिर बहस हो रही होती है एक-दूसरे से। वो करवाएँगे हम, वो मस्त रहेगा। तो वहाँ से मैं अनुभव को लेके आती हूँ, यहाँ से एस्ट्रोलॉजर को बोलती हूँ मैं बीच में बैठ जाऊँगी। आज का मुद्दा ये है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगी? नीलिमा, सेम टू यू, थैंक यू वेरी मच फॉर योर विशेस। चाय पर चर्चा। मज़ा आएगा। और मैं मरकरी वाली हूँ, आई एम नॉट सन, आई एम मरकरी। आई थिंक मतलब मुझे लगता है कि मरकरी को मैं अच्छे से यूटिलाइज़ कर पा रही हूँ पढ़-पढ़ के। येस, एस्ट्रोलॉजर वी कैन डू इट। हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, जो कि मेरा लैपटॉप, तुम थोड़ा टेकी ज़्यादा हो मेरे से, तो यू कैन डू इट, है ना? या मुझे सिखा देना। यूट्यूब का मैं तुम्हें बता दूँगी कैसे करते हैं लाइव, और ये क्या कहते हैं कौन सा वाला स्ट्रीमिंग, वी कैन डू इट। दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट हर टू डू। फ्रेंड्स आज बथुए का साग खाएँगे। लीव इट, वो भी ज़रूरी है, चाणक्य, मज़ा आता है। दैट कनेक्ट्स यू विद पीपल, यू नो। रुक गया? भैया रुक गए। हाँ, ऋत्विक, उनकी बैटरी
डाउन हो गई है, अब सोया जाए, ठीक है? हैं संदीप क्या? सॉरी। अभी ये हमसे हो नहीं पाएगा अभी, सर बहुत व्यस्त रहे और उन्होंने लास्ट उसमें बोल भी दिया था कि ही विल नॉट डू एनी पॉडकास्ट एनी मोर। Good night. Most of the time, there is religious pravachan in background and chat gossips. Yes, chats and gossips. That's what I like. Religious pravachan. मैं कुछ दिनों में बाबा जी बन जाऊंगी चाणक्य, सफेद रंग का चोला पहन के ऐसे करके बैठूंगी मैं। कद्दू पूरी के साथ में, कद्दू की सब्जी और चावल। And let's guess what? You should bring all the leading YouTube astrologers together. हाँ, और मैं एक काम करूंगी, चिंगारी छोड़ूंगी ऐसे करके, गायब। बूम बूम बूम, पटाखे फूट रहे हैं यहाँ। जुपिटर इन D9 लग्न है। नहीं नहीं, मेरे 12th में ही है, मेरे कहीं नहीं है, वही है, वर्गोत्तम, लियो। चाणक्य प्लीज इतना स्ट्रिक्ट नहीं हो। आई एम प्रैक्टिसिंग हियर, सी ऑलमोस्ट 10 चार्ट पर डे। जया किशोरी के साथ वाइट वाइट। अब चला जाए, नहीं तो चाणक्य आएगा और बोलेगा ओहो, दिस इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। एंड नाउ यू सी अगेन चिट चैट, फूड पे चर्चा, चाय पे चर्चा। यू नीड D10 D9 जुपिटर लग्न टू बिकम बाबा। यू नीड D10 D9, कोई बात नहीं, फिर हम बाबा नहीं बनेंगे तो हम योगा टीचर बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? मेडिटेशन कर लेंगे। ओजस मैम, इन भाव चलित चार्ट वेयर इज योर जुपिटर? गेस करो तो, गेस गेस गेस, कहाँ हो सकता है? इट्स इन 12th। मैं तो हंस हंस के एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, करना भी वैसे ही चाहिए, मुझे लगता है आप हंसी हंसी में जितना सीख जाते हो ना, बालपन की सीखी हुई बातें आप भूलते नहीं हो, सीरियस होके जितना पढ़ते हो सब भूल जाते हो। हाँ चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया हम इतने। ठीक है, इसलिए मेक योर लर्निंग वेरी फन लविंग। वो जो केमिस्ट्री की क्लासेस के अंदर, फिजिक्स की क्लासेस में हमने म्यूजिक के साथ में जो फॉर्मूला याद किए होते हैं ना, वो हमें याद रहते हैं, बट देन वी फॉरगेट द सीरियस वंस। दीपांशु सर का भाव चलित में सन राहु 11th में चले जाता है, बट अफेक्ट्स तो उनके सन राहु 10th के ही दिखते हैं, ये उनसे पूछ लेना। आपने कभी प्री गिवन चार्ट्स देखे हैं? जी, मतलब प्री गिवन चार्ट्स क्या होता है? व्हाट इज प्री गिवन चार्ट्स? भाव चलित में नहीं यार, मेरे भाव चलित में जुपिटर विनस दोनों 11th में है, नॉट इन 12th। जुपिटर D9 एंड 12th में क्या रिजल्ट देता है? अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, ठीक है? तुम लोगों को बहुत मजा आ गया, जैसे देवशित गया, यू सी 20 पीपल्स गॉन। अब मैं भी चली। आई न्यू इट। वाई MM? चंद्रशेखर सरस्वती का चार्ट खोलो एक बार, अब तो बंद कर दिया लैपटॉप मैंने। गुड नाइट, काफी अच्छा सेशन था, विल सेव दिस। यमदूत भी है यहाँ पे,
अब मेरी ज़िंदगी में कुछ सन भी क्या मुझे रिप्लाई अभी ना जाओ। अब तो जा रहे हैं जोश, थक गई मैं, ट्रैवल कर रही हूँ कल से। आई विल गो एंड स्लीप। कल मेरे को सारी कंसल्टेशंस कंप्लीट करनी है, सब कर दूँगी मैं। वॉचिंग फ्रॉम कनाडा, कीप वॉचिंग फ्रॉम कनाडा। कभी-कभी इंडिया में आके भी वॉच कर लेना। इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसमें शेडबल स्ट्रेंथ देखना, सन इज़ 205। हुँ। चलो गुड नाइट, बाय।